actress by bestowing upon her the prestigious award for her contribution to Bharatiya cinema. So just get ready to live the cinematic excellence of none other than Madhuri Dixit. आपका भारतीय सिनेमा के साथ नाता बहुत पुराना है. आज जब IFFI के मंच पर आते हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं. What's so special about IFFI which brings you here? Well, IFFI is ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, पैन इंडिया फिल्म्स दिखाई जाती हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स दिखाई जाती हैं, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल कम हियर. सो ऑफ कोर्स आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म. सिनेमा इंडिया में बहुत सारी साल करता है. Now we're getting the attention we deserve. And so we're very proud of our colleagues and IFFI and for bringing it all together. भारत की संस्कृति, भारत की पहचान में चार चांद कैसे लगाते हैं? This is a special recognition for contribution to भारतीय सिनेमा. जिन्होंने दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और जैसे कहा कि 4 दशकों से 4 चांद लगाने वाली मोहिनी से लेके माधुरी दीक्षित तक. माधुरी जी, ये पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है, और पहला अवार्ड किसी और के नाम पर नहीं. जो सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं कोई और नहीं, माधुरी दीक्षित जी आप सबके सामने हैं. 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली एक छोटी सी लड़की ने सबका दिल जीता था और सबका दिल बन गई हैं आज. आपके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, पर मैं कह सकती हूं कि असल में आपके आने से यह सम्मान इस मंच को मिला है. यू ट्रूली एन एरा डिफाइनिंग स्टार. एब्सोल्युटली. माधुरी जी, पहले तो मेरी कानों की रिक्वेस्ट है कि आपका जो वो आइकॉनिक डायलॉग है, I mean, हम सबने सुना है, पर अब लाइव मैं भी सुनना चाहती हूँ और गोवा वाले भी सुनना चाहते हैं. Guys, are you ready? इतने छोटे शब्द को आप डायलॉग कह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है. लेकिन मैं कर देती हूँ. Friends, as we know that at IFFI, we invite every year international superstars and global filmmakers here in India. And this year, at the 54th edition, yet again, we have an absolute A-lister, a global superstar in the truest sense, and my personal favorite, Michael Douglas. Absolutely. A luminary whose career has spanned over decades, and someone who has left an indelible mark on the very fabric of cinematic excellence. And we here at IFFI 2023 are extremely privileged to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to none other than the illustrious Michael Douglas. Let the magic of Michael Douglas' cinematic legacy unfold. Playing a game here? They're trying to kill me. The situation's more complicated than you think. I am extremely dangerous. Michael Douglas. I love to
give people a good time. Accident is the right word. There's no way out. I am the solution to your problems. ये बेहतरीन अदाकारी और ये निराला अंदाज किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। 1944 में जन्मे माइकल कर्क डगलस ने फिल्मी कैनवस पर अपने 50 साल के फिल्मी सफर में कई मुकाम हासिल किए। It's not happiness to see me, is it? She said you sexually harassed her. She harassed me. Mr. President, I don't know what to say. I'm speechless. बतौर एक अभिनेता और एक निर्माता के माइकल डगलस ने अपनी एक अमिट पहचान छोड़ी है, जिसकी गूंज विश्व फिल्मी इतिहास में सदियों तक सुनाई पड़ेगी। Not meet my wife by chance. She is in love. You're in business. It's called a con, and my wife is the grand prize. संभ्रांत परिवार में जन्मे माइकल डगलस की माता और पिता दोनों ही अपने जमाने के टैलेंटेड हॉलीवुड एक्टर्स थे। माइकल अपने पिता से अक्सर पूछा करते थे कि एक्टर बनने की शुरुआत कहां से की जाए। पिताजी इसके खिलाफ थे, पर अंत में उन्होंने अपनी ही एक फिल्म कास्ट अ जायंट शैडो में माइकल को एक जीप ड्राइवर का छोटा सा रोल दिया। उस छोटे से रोल ने विश्व को एक बेहतरीन, बेबाक और संजीदा अभिनेता दिया। बतौर अभिनेता और निर्माता उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक महत्व के विषयों पर भी बेबाकी से फिल्में बनाई। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट को 1975 में ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में भी जबरदस्त सफलता मिली। विश्व के तमाम देशों के लोगों ने खुले दिल से उनकी फिल्मों को सराहा। फेटल अट्रैक्शन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट, ट्रैफिक एंड रोमांसिंग द स्टोन कुछ उनकी यादगार फिल्मों में से हैं। माइकल डगलस की बेहतरीन अदाकारी, उनकी एक्सेप्शनल एंड ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल टैलेंट को विश्व के चुनिंदा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। Thank you to my Academy fellow members. माइकल डगलस का एक और पहलू है जो विश्व शांति के लिए समर्पित है। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र के तब के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने माइकल को विश्व शांति का दूत भी बनाया। आज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माइकल कर्क डगलस को उनकी बेमिसाल अदाकारी के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। He's a winner of 2 Academy Awards, 5 Golden Globe Awards and Emmy, and recently he has been awarded the Golden Palm at the 76th Cannes Film Festival. Well, as I mentioned, I do think that under Minister Thakur, as well as Prime Minister Modi, the last few years you've seen more money put into the production and financing of films. It's been a very successful time. I also think there's more and more, and I think sort of the spirit of this festival and the beauty of this festival is you had 78 foreign countries represented, and it's only a reflection of the strength of your Indian filming, which is renowned and known around the world. So I think you're in very, very good hands. I think it's beginning to, even with all of the success here in India, it's traveling more and more. Well. What an amazing journey. What an amazing journey as we look back at the glimpses. And honestly speaking, Satyapriya, my heart and my chest swells with pride and jubilation looking back at these glimpses. Amazing, amazing last 10 days or so we have had. And what an experience for all of us.
Absolutely. It has been an incredible journey. If we look back at the 9 days of IFFI, starting from 20th November, and today is the closing ceremony. What an incredible journey it was. अक्षय, अगर हम बात करते हैं गाला प्रीमियर्स की, गाला प्रीमियर्स के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे मास्टर क्लासेस थी, इन कॉन्वर्जेशन सेशंस थे, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि IFFI का एक बड़ा हाईलाइट था, वो ये था कि डेलीगेट्स तो IFFI को अटेंड कर ही सकते थे, लेकिन नॉन डेलीगेट्स के लिए अरेंज किया गया IFFI सिने मेला, जहां पर गोवा के सभी टूरिस्ट और साथ ही गोवा के लोकल्स आके मजा ले सकते थे IFFI 2023 का। एब्सोल्युटली सत्यप्रिया, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और कितना कॉम्प्रिहेंसिव ये फेस्टिवल रहा है पिछले 9-10 दिनों में। आप जानते हैं कि कितने 9 दिनों में कितने लोगों ने फिल्में देखी हैं, कितनी मास्टर क्लासेस अटेंड की हैं, कितने ही दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में जाना है। और जैसा हम बात करते हैं कि एक मेल्टिंग पॉइंट के तौर पर यहाँ पर IFFI हर बार साबित होता है, और हर एडिशन इसका बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और 54th एडिशन भी हैज बीन एब्सोल्युटली सुपर सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन द रेड कार्पेट एज वी इंच टुवर्ड्स द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस 54th एडिशन। तो इस रेड कार्पेट पे भी न जाने कितने सारे खूबसूरत जलवों का और जलसों का हम सबको इंतजार है। यहाँ पे होने वाले हैं आज क्लोजिंग सेरेमनी में वो जलसे, वो जलवे जो हम सब देखते ही रह जाएंगे, आई एम श्योर। फिल्मों से जो हमारा रिश्ता है वो इतना गहरा है कि उसको जितनी उसके बारे में बात की जाए वो बहुत कम है। लेकिन नेचुरली एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ सच रेप्यूट, यू नो, इट इज़ सच अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर इंटरनेशनल सुपरस्टार्स, फिल्म मेकर्स। और हमने नेचुरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी ये बात अक्सर सुनी थी कि किस तरह का पोटेंशियल इंडियन टेक्नोलॉजी के पास और कंटेंट की जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा है, मतलब हर तरह के कंटेंट्स है। और इस बार तो OTTs के लिए भी यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड्स हैं। फाइनल डे है आज यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाने हैं, बहुत सारी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेज होने वाली है। आई एम ग्लूड टू द स्क्रीन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एब्सोल्युटली, विविधताओं से भरा हुआ देश है भारत, और यही विविधता नजर आई IFFI के 54वें एडिशन में भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेड कार्पेट पे हमारे गेस्ट का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रेड कार्पेट के पहले गेस्ट, फिल्म क्रिटिक एंड एक्सपर्ट मुर्तजा अली खान के पास। Murtaza, welcome to the red carpet of the closing ceremony of IFFI 54. Thank you so much, Satya. Finally, the wait is over. You know, this has been a cinema carnival, cinema extravaganza like no other. Because you have to understand that IFFI is not just a film festival; it's an amalgamation of emotions, and it's also one of the 14, accomplished film festivals in the world which are accredited by the World's Production Council. And so this is very important that we are now finally coming to the end, and we'll see all the amazing winners. For example, I'm very excited about the Golden Peacock winner. Who would that be? We have 15 films here, 13 from India and 12 from the global arena. So this is a very stiff competition. The way I look at film festival, it is always, a way of looking from the past to the future and via the present. So we have the restored classics, which have been one of the highlights. Hakikat, we have had Guide, we have had international films such as Paranjov, Shadow of Forgotten Ancestors, we have The Exorcist by William Friedkin, and when I talk about the future, we also have 75 Creative Minds, which I feel is a master, thought that has emerged out of Honorable Minister Union Anurag Thakur. It's his brainchild, and we are in the 3rd year. And again this year, we had an amazing lineup of these young, brilliant creative minds. I really think that this is one segment of IFFI that's really going to give us future storytellers. It's going to give us the best of Indian cinema in the years to come. Absolutely. अभी आपने रिस्टोर्ड क्लासिक्स की बात की, तो जितने आपने रिस्टोर्ड क्लासिक्स देखे, आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट कौन सी थी? मेरी परंजॉब इज रियली रिगार्डेड एज दिस मार्ट ने भी उनके बारे में कहा है कि अगर सिनेमा एक मंदिर है तो उस मंदिर का कोई भगवान है तो परंजॉब है। तो आप जब उसको देखते हैं बड़े पर्दे पर, तो सीरियसली एज अ फिल्म लवर आई वाज रियली ट्रांसपोर्टेड टू दैट अमेजिंग वर्ल्ड दैट ही क्रिएटेड। तो रिस्टोरेशन में जो काम हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिनेमा जो है एक बेसिकली टाइम कैप्सूल की तरह से मैं देखता हूँ। तो 60s की बात करें, 70s की बात करें, तो ये बहुत कमाल की जर्नी है जो पॉसिबल हुई है आज की जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। एक हमने प्रिजर्व कर लिया है इस ट्रेजर को। अभी आपने बात की 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ द फ्यूचर की, तो ये 75 जो माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स हमने पूरे भारत से चुने हैं, ये
हमारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास है उसको अपने हाथों में लिए आगे देख रहा है हमारे फ्यूचर की ओर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आपको मौका मिला कि आप इनमें से किसी से इंटरेक्ट कर सकें? जी हाँ, मैं काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो विनर थे उनसे तो मेरी लंबी बातचीत हुई थी। जो पूरी की पूरी टीम है उन्होंने बताया था कैसे 48 आवर्स के अंदर उनको ये चैलेंज दिया जाता है और उसके दौरान उनको फिल्म बनानी पड़ती है। इस बार जो जज हैं वो शुजत सरकार हैं और इसलिए आई वुड से दैट जो विनर हैं that have actually been best tested by the best in the business। और सबसे खास बात क्रिएटिव माइंड्स की ये रहती है कि आपको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग से गुजरना पड़ता है इन अ लिमिटेड टाइम। सो राइट फ्रॉम आइडिएशन टू एडिटिंग टू एवरीथिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस सब उसमें आ जाती हैं। सो द रीज़न वाई आई फील दैट क्रिएटिव माइंड्स आर अमेजिंग इज़ बिकॉज फ्यूचर में जो स्टोरी टेलर्स होंगे उनको इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से, जैसे प्लेटफॉर्म से। इसीलिए जो अनुराग ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है, आई थिंक इट्स रियली अ गेम चेंजर। बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं हमारे ग्रेट लेगेसी के, वी हैव अ लेगेसी विच इज़ मोर देन 100 years नाउ। अगर हम बात करें राइट फ्रॉम द डेज ऑफ दादा साहब फाल्के, और फिर हम बात करें राज कपूर एंड ऑल द वे टू द प्रेजेंट जनरेशन, श्याम जी की बात करें अगर हम, तो ये जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स हैं ये अब बेसिकली बेटन पास कर रहे हैं इन यंगस्टर्स को, इन फ्यूचर क्रिएटिव जीनियसेस को, कि आप लीजिए, आपके आगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक दिस ट्रेडिशन फॉरवर्ड विच इज़ द ग्लोरियस लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा। इसलिए आई वुड से दैट दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड नो वंडर नाउ अब 3 साल हो चुके हैं, 75 so 225 creative minds have already emerged. So you can very well imagine that future is really going to be enriched by this experience. Absolutely। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा सेलिएंट फीचर ये रहा कि जो युवा आए हैं वो केवल भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से भी आए हैं। तो कैसा रहा इन 75 क्रिएटिव माइंड्स का सफर? आइए देखते हैं अगली एवी में। It's a hectic thing. I mean, we haven't slept for 4 days. If we make a good film in 48 hours, it is a win for us. It comes down to the last, handling your pressure and how well you're bonded. Oh, our editor, is like super tense right now. The editor is really sweating, even though it's completely AC. So yeah, the pressure is rising. I really feel fortunate that I wouldn't call them the future, directors. I would call them the director of today. सबने बना दिया तुम तो लोगों ने. So आज के director बन चुके हो तुम लोग. इफ़ी में एज अ स्टूडेंट आया था 2 साल पहले और आज मुझे एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ पार्टिसिपेंट आने का मौका मिल रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे एनिमेशन के और सिनेमेटोग्राफी के, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं और हरियाणा में तो अभी फिल्मों का चलन इतना नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। And we are still in conversation with Mr. Murtaza Ali Khan, and what a pleasure to have you on the red carpet here for the closing ceremony of the 54th IFFI. And Khan Saab, you mentioned about the 3rd edition of 75 brilliant minds, that they are creative minds. What an opportunity for the young kids, We are talking about India becoming the hub of the global cinema, and these 225 odd young filmmakers, young technocrats, and so many various aspects of filmmaking. Amazing future we have. See, I really appreciate when Mr. Thakur said that, India will become the global superpower as per Modi's vision by 2047, and cinema is going to play a very important role in that. And when we talk about cinema, we have to talk about the youngsters. And this is such an initiative that is allowing India to see some of the best talents from different parts of country. As you rightly said, it's not just from the metros. We are talking about each and every nook and corner of India. So वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि कैसे young brilliant minds आते हैं यहाँ पे
एक साथ, और एक साथ वो जो टीम को लेके जो सिनर्जी होती है वो भी क्रिएट होती है. एंड देन व्हेन यू हैव अ जज लाइक सुजय सरकार, सो यू आर बीन वॉच्ड एंड ट्रेन्ड बाय द बेस्ट. और इस बार मास्टर क्लासेस भी रहे इन लोगों के लिए, तो ये लोग साथ साथ सीख भी रहे थे और साथ साथ उसी चीज़ को ही अप्लाई भी कर रहे थे. सो दैट इज वॉट हैज टेकन द आइडिया ऑफ दिस इनिशिएटिव टू द नेक्स्ट लेवल. नाउ वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड ईयर एंड आई सी, you know, already 225 creative minds have already been given to the world, you know, by India through this platform, which is IFFI. Absolutely, it speaks volumes about the stature of the festival as an international of international repute. You know, those kids getting this opportunity. How could we imagine something like this, you know, say 20 years ago? It wasn't possible. But, you know, IFFI has grown leaps and bounds with every passing edition. And at the 54th edition, all these young technocrats, young filmmakers, जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि हमारे देश के तो हर 10 किलोमीटर पे एक नई कहानी है, हर भाषा बदलती है, कल्चर बदलता है, और सबके लिए अपनी एक वॉइस मिल रहा है IFFI के थ्रू वहाँ पे. अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है. यहाँ पूरे दुनिया के फिल्म मेकर्स आए हुए हैं, पूरे दुनिया के टैलेंट आए हुए हैं. तो जब वो देखते हैं यार भारत में छोटे छोटे शहरों से निकल के ये क्रिएटिव टैलेंटेड माइंड्स आ रहे हैं, सो दे गेट वेरी एक्साइटेड. आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी फिल्म मेकर्स, आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी ऑफ दीज, यू नो, इंटरनेशनल टेक्नीशियंस हु आर हियर, एंड दे आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज इंडिया विल ऑल्सो बी द ग्लोबल हब इन अ सिनेमा वे. तो वो डेस्टिनेशन भी रहेगा, टेक्निकल स्पेस में भी सबसे ज़्यादा इंडिया को लेके हब है, और शूटिंग लोकेशंस के टर्म्स में भी वो इंडिया आना चाहते हैं. अब टैलेंट भी इंडिया से निकल के आएगा, सो मे बी वी कैन हैव दिस इंटरनेशनल पीपल कम टू इंडिया, और हमारा अपना टैलेंट, यू नो, आवर ओन मेकर्स, आवर ओन टेक्निकल पीपल, दे विल बी हेल्पिंग दिस प्रोजेक्ट्स. सो इंडिया इज गोना बी अ लीडर अगेन इन दिस फील्ड. Very rightly pointed out, very rightly Mr. Murtaza has said about all the filmmakers and different walks of filmmaking departments. They have been here conducting master classes and nurturing young talent. I think it's time to look at those master classes which has helped in the last 10 days or so. Every time whenever I stand in front of the camera, I don't know what to do. So please don't take this as a class. Treat me as one of you. And then let's just sit and share. And I'm a great fan of Pushpa madam. It is not, நீங்க பேசினதுக்காக நான் திரும்பி பேசல. And then my language, please try to understand. Don't refer dictionary anything. Just refer my face and there you can understand. अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती. It was very simple. It's always instinct based. Whenever a piece of story, a synopsis, a content, or a screenplay comes my way, and then it matches the passion of the filmmaker and writer. The story of Ae Watan Mere Watan is just so inspiring, and I could see the passion in Kanan's eyes and Darab's eyes, who wrote the film along with Kanan. I just want to say that Karan sir said it very beautifully, that I think this is a story that deserves to be told. Hindustan Zindabad! Hindustan Zindabad tha, Zindabad hai, aur Zindabad रहेगा. ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. वाह. It's great interaction to be over here, and with Taran, definitely with you, it's great always. I think this is the third time we are having a master class over here in this last 10-12 years, I think so. Those master classes, obviously, absolute eye-opener. And on that note, we would like to, you know, have a little more word about the festival. You've been here in the last 10 days or so, Mr. Murtaza. You know, other than master classes, open air screenings, you know, एक वो बड़ा एक warm texture उन्होंने festival में add किया है कि 3 जगह पर यहाँ पर था, रविंद्र लॉन में, उसके अलावा मीरामार बीच पे और अंजना बीच पर भी स्क्रीनिंग वहाँ पर होती थी. शाम को लोग आते थे, लेजर टाइम में आराम से एक बड़ा माहौल बनता था. वो एक बड़ा एक ऑल इंक्लूसिव बनाता है फेस्टिवल को.
देखिए इफ़ी जैसे फेस्टिवल के साथ एक दिक्कत कई बार ये हो जाती है कि इतने हज़ार डेलीगेट रजिस्टर कर देते हैं कि एनएफडीसी के लिए ऑर्गेनाइजर्स के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है टू ऑफर मोर डेलीगेट पासेस। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू जो उन्होंने शुरुआत की वो है सिनेमा मेला, जिसकी हमने बात करी, विच इज़ अ हिट। और ये जो आउटडोर स्क्रीनिंग्स होती हैं, इसमें जो माहौल होता है ये तो आप सिर्फ देख के ही जान सकते हैं। यू हैव टू बी देयर, वी कैन शो यू द विजुअल्स आल्सो, बट जब तक आप उसमें बैठे नहीं हैं तब तक आपको वो मज़ा और वो लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। और इस बार इफ़ी की खासियत ये भी है कि बाजार जो है दैट ऑल्सो ब्रॉट सम अमेजिंग सेशंस थ्रू नॉलेज सीरीज, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी ऐड कर दी है। मुर्तज़ा, फिल्मी बाजार की बात हुई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी एक सेशन मॉडरेट किया है फिल्म बाजार का, और वो बिल्कुल अपने आप में एक अनूठा सेशन था। क्योंकि जब भी हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो हम सितारों की बात करते हैं, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं, लेकिन जिस विषय में आपने बात की, सस्टेनेबिलिटी इन फिल्म मेकिंग, अ ग्रीन इनिशिएटिव इन फिल्म मेकिंग, दिस इज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग दैट इंडिया हैज थॉट ऑफ। कैसा रहा ये सेशन एंड हाउ वाज द रिस्पॉन्स? 2006 में जब अल गोर की इनकन्वीनियंट ट्रुथ फिल्म आई थी तो बहुत सारे लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ी। उससे पहले क्या हो रहा था कि हम लोग मानते थे, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे, पर हम लोगों को लगता था कि ये फ्यूचर का फिनोमेना है। उससे पता चला दैट इट्स अपॉन अस, the problem of global warming, environmental change, everything is upon us. So इस सेशन की खासियत यही थी कि हमने बात करी कि फिल्म मेकिंग जो है वो उसमें भी कितना वेस्टेज होता है। अगर हम बात करें मटेरियल की वेस्टेज होती है, फूड की वेस्टेज होती है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। तो चंडीगढ़ करे आज की जो फिल्म आई थी अभी पैंडेमिक के दौरान, प्रज्ञा कपूर ने इसको प्रोड्यूस किया था, अभिषेक कपूर ने इसको डायरेक्ट किया था, आयुष्मान खुराना और वानी कपूर इसमें मुख्य भूमिका में थे। इसमें इन्होंने, प्रज्ञा कपूर ने इनिशिएटिव लिया कि हम इसमें सस्टेनेबल वे में शूट करेंगे। तो फूड वेस्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया, मटेरियल वेस्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया। और ये सेशन बेसिकली इस केस स्टडी को लेके आगे बढ़ता है। तो हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ी हुई थी, दिव्या जुड़ी हुई थी, जिन्होंने एक्चुअली में स्क्रैप नाम की कंपनी चलाती हैं और प्रज्ञा के साथ मिलकर एक्चुअली में ये रियलाइज किया और एक्चुअली में सस्टेनेबल फिल्म मेकिंग की तरफ आगे बढ़े। अब ये केस स्टडी पूरा बॉलीवुड पढ़ रहा है। और साथ हमारे जुड़ी हुई थी जय साइंस नाम की एक लेडी, जो यही काम वेस्ट में कर रही हैं। उन्होंने अभी श्रुति हसन के साथ एक द आई नाम की फिल्म बनाई है ग्रीस में, जिसमें कि एक्चुअली उन्होंने ट्रेलर्स की जगह बेडोइन टेंट्स यूज किए। सो आप सोचिए, जीरो वेस्टेज हो गया व्हेन यू हैव, एंड दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग इफ यू आस्क मी, बिकॉज वी कैन नॉट गो ऑन एंड वेस्ट फूड। हर फिल्म सेट पे प्लास्टिक वेस्टेज की बात करें तो आई थिंक इट्स स्टैगरिंग, फूड वेस्टेज की बात करें तो क्विंटल्स में और टन्स में फूड वेस्ट होता है। तो वी कैनॉट अफोर्ड, द प्लैनेट कैनॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ वेस्टेज। सो दिस सेशन वाज ऑल अबाउट दैट कि कैसे इस वेस्टेज को मिनिमाइज करें और कैसे फिल्म मेकिंग का जो फ्यूचर है उसको ग्रीन बनाएं और उसको सस्टेनेबल बनाएं। वंडरफुल, ऑब्वियसली अमेजिंग साइड दैट यू हैव टच्ड। मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट का, सिनेमा की हो या कोई और एस्पेक्ट हो आर्टिस्ट के, सबसे ज़रूरी यही है कि कितना सेंसिटिव आपको सोसाइटी और इकोसिस्टम को और ह्यूमैनिटी को लेकर बनाता है। अमेजिंग वर्क यू हैव डन, अमेजिंग इनसाइट्स दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड वी आर नॉट गोना कीप यू वेटिंग हियर। एंजॉय द क्लोजिंग सेरेमनी, वी आर इंचेस अवे फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा। वैसे मुर्तज़ा ने अभी बात की थी रिस्टोर्ड क्लासिक्स की। अक्षय, कल जब हम दोनों मार्किनेज हॉल में गए और हमने देखी गाइड, सो आई हैड गूज बम्स, आई लिटरली हैड टीयर्स रोलिंग डाउन माई चीक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, Absolutely, I totally agree with you here. सत्यप्रिया, कमाल का एक्सपीरियंस था। और रिस्टोर्ड क्लासिक्स में गाइड के अलावा भी बहुत सारी फिल्में थी जहाँ पे लोगों को वो फिल्में देखने को मिली, लेकिन दोबारा से उनको रिस्टोर किया गया, उनकी क्वालिटी को, उनकी टेक्नोलॉजी को एनहांस किया गया और लोगों को वो जो एक्सपीरियंस हुआ था, नेचुरली उसका जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो तो हमेशा वहाँ पे रहता ही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं और उन क्लासिक्स को जब रिस्टोर किया गया तो उनका जो इम्पैक्ट था, नेचुरली इट वॉज डबल्ड एंड बोथ ऑफ अस केम आउट टोटली ओवरवेल्म्ड आफ्टर वॉचिंग दैट अमेजिंग फिल्म इन मैकनीज पैलेस। छम 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 छड्डी लागे छम छम विद्या यही घम घम छम 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 छम। The National Film Heritage Mission has embarked on a journey to restore iconic Indian classics. Much like the making of a film involves a dedicated group of people, the task of preserving films is a commitment to safeguarding the original artwork. The fragile nature of celluloid demands careful preservation and maintenance. Frames are carefully repaired by hand before being digitized in high-quality resolution.
The digitization of a film, when you do it at high resolutions, it is like using a microscope. And all the defects which have been, which have kind of happened because of the passage of time, those are going to get magnified. And the obvious thing there is the restoration aspect. Films available in public domain often do not uphold archival ethics and do not present them in correct aspect ratio and resolution. मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है सफर में कहीं खो ना जाऊँ मैं, रास्ता नया। Restoring these classics in 4K resolution will grant the future generations the opportunity to cherish our historical and cultural legacy. आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। Absolutely amazing to look at those restored classics in the National Heritage Mission, and we are lucky to have Jaya with us. Jaya, you've been here in the last 10 days covering literally every section, talking to a lot of people. Share your experience with our viewers on Doordarshan, what you've been up to in the last 8 or 9 days. डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत ही शानदार और बहुत ही ख़ास रहे, क्योंकि अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करते हैं तो उसका 54वां संस्करण वाकई बेहद यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार हमने देखा रिकॉर्ड नंबर में एंट्रीज आई IFFI 2023 के लिए, और पिछले 10 दिनों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है IFFI के मंच पर, वो बहुत शानदार है। द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा हमने देखा IFFI के 54वें संस्करण में, और ख़ासतौर पर IFFI 2023 का जो ये संस्करण है वो इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि कई नए इनिशिएटिव्स इस बार लिए गए, कई नई पहल इस बार जिनकी शुरुआत हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप ले सकते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स की जो लोकप्रियता है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए पहली बार IFFI 2023 के मंच पर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का OTT अवार्ड दिया जा रहा है, जिसके लिए रिकॉर्ड नंबर में एंट्रीज आई। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, द 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसका तीसरा संस्करण इस बार यहाँ पर रखा गया। और तीसरा संस्करण था इसलिए हम देख सकते हैं कि देश भर से जो प्रतिभागी चुने गए, देश के कोने कोने से, छोटी छोटी जगहों से प्रतिभागी आए, और आज देखिए सिनेमा की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। जी हाँ, 600 लोगों ने वहाँ पे एंट्री की थी, जिनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट 75 लोगों को चुना गया था यहाँ पे। जया, यू टॉक्ड अबाउट OTT, जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार भी यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर और दूसरी कैटेगरीज में OTT वेब सीरीज को इनाम दिए जाने वाले यहाँ पे। वुड यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट वेब सीरीज विच यू बीन अप टू, जिसको आप बिंज कर रही हो? मैंने काफ़ी वेब सीरीज़ देखी हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने फ्रीलांसर देखी, जो बीते साल जो वेब सीरीज़ रही उसमें एस्पिरेंट्स वो वेरी गुड, पंचायत वाज वेरी गुड, जिसमें हम सभी के दिलों को छुआ है। बिल्कुल। तो OTT प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं कि इस बार OTT प्लेटफॉर्म्स में जो फिल्में आई, यानी कि जो छोटे पर्दे पर आई, दर्शकों का उनको प्यार मिला, लेकिन उन फिल्मों को भी यहाँ पर बड़े पर्दे पर देखने को मिला। यानी कि उन OTT प्लेटफॉर्म्स वाली फिल्म को यहाँ पर बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग हुई। एक बंदा ही काफ़ी है, गुलमोहर, ये बेहद खूबसूरत फिल्में जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आई, धूम मचाई, और यहाँ पर IFFI ने इन फिल्म्स को दी एक बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग, जो कि सब हम दर्शकों के लिए बहुत ही यादगार पल रहा। अमेजिंग जर्नी हमारी रही है पिछले 8-9 दिनों में। कैचिंग डस्ट से ओपनिंग फिल्म से शुरू हुआ था, और आज ये क्लोजिंग सेरेमनी से पहले दिखाई गई थी फिल्म जो फेदर वेट यहाँ पे क्लोजिंग फिल्म है। यहाँ पर रॉबर्ट कोलॉडनी की वो फिल्म है, बेस्ड बायोलॉजिकल ड्रामा
autobiographical drama, Yes. boxing, sports drama. I particularly looked forward to it. मेरा ख्याल है रेड कार्पेट पे जो रिस्पांस था वो भी यहाँ पर देखते ही बनता था. एंड आई जस्ट लव द जॉनर ऑफ दीज फिल्म्स जया. जब बात होती है अपने जीवन की कि किस तरह से हम डाउनफॉल्स को फेस करते हैं और फिर किस तरह से रेजिलियंस को दिखाकर हम ऊपर उठते हैं और फिर आसमानों को छूते हैं, मुझे लगता है फेदरवेट इसी के बारे में बात करती है और इसीलिए शायद हर दर्शक के दिल को भी छूती है. बिल्कुल, और बहुत ही खास है इसका प्रोडक्शन. 1960 के दशक में इसको सेट किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से उस ज़माने से जिस तरह से उस एरा को दिखाया गया है. वो एक बॉक्सर होते हैं, नहीं उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, दोबारा एक मौके के बाद वो दोबारा अपने इस करियर में आगे आना चाहते हैं. डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उनके जीवन में एंट्री लेते हैं और किस तरह से उस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है. अमेरिकन फिल्म है जिसका एशिया प्रीमियर इस बार IFFI 2023 के मंच पर हो रहा है. हम कह सकते हैं कि दुनिया भर से जो प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में फिल्म गई है, 19 ऐसी फिल्में इस बार IFFI 2023 के मंच पर आ रही हैं. जिस तरह से 198 अंतर्राष्ट्रीय जो पेनोरमा की हम बात करें, फेस्टिवल कलाइडोस्कोप, उसमें यहाँ पे फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई है. वी हैव एशिया प्रीमियर, वी हैव वर्ल्ड प्रीमियर और बहुत ही खूबसूरती से इस बार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में हिस्सा लेने की होड़ लगी IFFI के मंच पर, वो बहुत शानदार था. बिल्कुल. तो चलिए देखते हैं फेदरवेट की कुछ झलकियां, हम और आप साथ मिलकर. Hi Robert, how are you doing? I'm doing well, honored to be here. How's your experience been at IFFI? It's been incredible. The festival, the programming has been so beautiful, rich with cinema, and we're just over the moon to be a part of it. Tell us something about how did you come about to make a movie like this? The Featherweight is a team effort, a project based in love and a lot of hard work. It's taken us years to bring it to the screen. But it's a film that is imbued with the identity of cinematic history and drama and realism. And our lead actor, James Matteo, has put his entire self onto the screen, in the ring, in this role of Willie Pep, the great American boxer. And so we cannot wait to present it to this international audience. We can't wait to watch it. James? Hi James, how are you doing? I'm doing very well. How are you? Thank you. It's been remarkable. I mean, I can't imagine a grander stage than to be here in Goa, in the country. It's so rich with texture, and the people are so warm and kind, and the food is great. Yeah, it's a wonderful experience, a dream come true. Sure, thank you very much. And tell us something about your role in the movie and how did you come about? Any challenges that you might have faced while shooting? Oh, while shooting, well, COVID hit us, so we stopped production. But we kept fighting like our production always did. We fought for years to get this movie made. You know, one of the challenges, obviously, is the interior of Willie Pep, who he was inside, and the exterior of Willie, which is how he fought, because he was such a winner inside the ring and outside the ring. He was losing with his marriage, his finances, his relationship with his children. So I had to balance both of that. Training quite a bit because he was so special inside the ring. But it was a thrill to play Willie and a great honor. And I am glad that he is now in cinematic history. Sure, thank you very much. Bennett? Hi Bennett, how are you doing? I'm good, how are you? Very well, thank you. Tell me about your experience at IFFI so far. Oh, it's been an absolute dream. It's as magical as you could imagine. And how did you come about to produce this movie? I came attached along with Rob to this project about 5 years ago, and it's been as fun as you could imagine. Well, thank you very much all of you for being here.
Always had a thing for good-looking clothes. I spent a lot of money on wardrobe. You know, with being champ, but it looked like one too. Now this suit really paid off for me. Yeah, looking sharp. What do you think? Huh? I got nothing? You gonna give me nothing? Nothing? You get that. You keep this camera off my way. You know, I guess I can't sell you. Take a picture. It'll last longer. Hey, Herman. Oh, you see this? This was a gift. A good gift. Bob Hope. You believe that? He gave me this. He came to all my fights. This is engraved. It says, "For the champ, you're always a pleasure to watch." You'd expect better from Bob Hope. She's cute. That's why I keep her around. You almost ready? I'm almost ready. तो क्या शानदार सफर रहा पिछले 9 दिन इफी 2023 का। जैसा आपने कहा, कैचिंग द डस्ट से लेकर फेदरवेट तक बेमिसाल फिल्में और साथ ही इन कॉन्वर्सेशन सेशंस, मास्टर क्लासेस। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी श्यामा। श्यामा, आपने पिछले 9 दिन यहाँ गोवा में बिताए और बहुत सारी इन कॉन्वर्सेशन क्लासेस भी आपने अटेंड किए। आपके लिए पर्सनली क्या हाईलाइट रहा? जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हर्ड रानी मुखर्जी जो लास्ट लेग में था, तो रानी मुखर्जी का जो चीज़ था, व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज वेयर शी सेड दैट यू नो यू शुड एक्सेप्ट रोल्स विच इज़ ऑफ योर एज। आप स्टूडेंट का भी रोल कर लो इफ़ यू आर 45, नो इशू इन दैट, बट आप वैसे भी रोल्स करो जो आपको सूट करे। यू ऑल शुड मेंटेन दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑडियंस लाइक्स टू कंज्यूम दैट। उसके बाद में द बिगेस्ट ऑफ ऑल वॉज माइकल डगलस। वी हर्ड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday and today I was there in that in conversation session where he has talked about his father, how it was to come out of the shadow of his father, because Kirk Douglas के काम भी हैं जो माइकल डगलस के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा का तो स्रोत है ही, बट उनके लिए एक चैलेंज भी था कि उससे वो कैसे बाहर निकले। तो ही स्पोकन अबाउट दैट। देन उसके बाद में उन्होंने इंडियन फिल्म्स में वो क्या करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू डू अ सीक्वल ऑफ रोमांसिंग द स्टोन, बट वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया यहाँ पर। तो अब वो यहाँ पर आके, चूँकि अब भारतीय सिनेमा इतना इसकी क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज बढ़ चुका है, तो अब वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। वेल, आई हैव 2 अमेजिंग लेडीज हियर विद मी एंड ऑब्वियसली श्यामा ने बात की यहाँ पे रानी मुखर्जी का जो ओपिनियन था विमेन सिनेमा के बारे में, किस तरह से एज अप्रोप्रिएट रोल करने चाहिए। हमने बात की थी विद्या बालन से भी, जो कह रही थी कि किस तरह से आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर एक्टर्स को अपने आप को पुश करना चाहिए। किस तरह के एक्सपीरियंस देखती हैं आप? ऑब्वियसली इफ़ी ने एक ब्रेकिंग द सीलिंग वाला काम जो करता है, इंटरनेशनल सिनेमा यहाँ पे लोगों को देखने को मिलता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं विमेन रोल में भी? आपको कैसा लगता है जो फिल्में हमें देखने को मिली हैं इस साल? देखिए, इस बार हमने देखा कि जो 15 सिलेक्टेड फिल्म्स थी गोल्डन पीकॉक के लिए, विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, उसमें से कई सारे फिल्म्स हैं जो विमेन ओरिएंटेड हैं, विमेन के रोल दिखाते हैं या विमेन ने बनाई हुई हैं, वैसे वाले हैं। अब आप देखें ओवर द इयर्स काफ़ी सारे विमेन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स ये यहाँ पर मेन स्ट्रीम रोल कर रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि भाई सपोर्टिंग कर रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं है, वो सीन पूरा बदल चुका है। एंड इफ़ी हैज़ रियली बिन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग दैट पुश, एंड वो हमने यहाँ पर देखा भी है। अगर हम बात करें एक और टॉपिक की, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, विच इज़ दी ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड, जो कि यहाँ पर दिया जाता है फॉर दोज फिल्म्स जो महात्मा गांधी के पीस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस के इन सब वैल्यूज़ को बेस्ट पोर्ट्रे करते हैं। तो हमने उनके भी जो जूरी मेंबर्स थे उनसे बात की, रिजवान अहमद हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनसे भी हमने बात की टू अंडरस्टैंड कि क्या एलिमेंट था जो वो एक चीज़, क्योंकि पीस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस तो वी ऑल नो कि वो सारी चीज़ों को फिल्म में होना है, बट व्हाट वाज दैट वन एलिमेंट which they like the most? Humanity is that one element. Absolutely. I think ये बहुत ही एक अमेजिंग एस्पेक्ट है इफ़ी का, क्योंकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, लेकिन ये यूनेस्को ICFT मेडल जो दिया जाता है, क्योंकि फिल्में ऑब्वियसली, हम थोड़ी देर पहले मिस्टर मुर्तज़ा से भी यही बात करते हैं, उन्होंने ग्रीन इकॉनमी को किस तरह से फिल्म मेकिंग के साथ टच किया था, कि
जितना हम अपने आप को सेंसिटाइज करेंगे ह्यूमैनिटी को लेकर, सोशल इश्यूज को लेकर, उतना ही नेचुरली हर आर्ट का यही फर्ज रहता है इंसान को और उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी सेंसिबिलिटी को एनहांस किया जाए. लेकिन प्रेजेंटिंग एन एक्सक्लूसिव अवार्ड फॉर दैट, डेडिकेटिंग एन एक्सक्लूसिव सेक्शन फॉर दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टैचर एंड द रेंज ऑफ IFFI एज अ फेस्टिवल. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग सेक्शन दैट वी हैव हियर. एब्सोल्युटली. फिल्में आखिरकार होती तो समाज का आईना है अक्षय, एंड यू वुड आल्सो एग्री विद मी श्यामा. और जब फिल्में समाज के हर एक एस्पेक्ट को दिखाने में कामयाब होती हैं तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट अपने आप में कामयाब है. और हमने समाज के हर एक एस्पेक्ट को यहाँ IFFI 2023 में देखा है. अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्रीज की, इस बार IFFI 2023 में डॉक्यूमेंट्रीज के लिए एक स्पेशल सेक्शन भी था, तो क्या आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख पाएँ? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ. मैं एक मूवी भी नहीं देख पाई हूँ, बट उनकी स्टोरीज मैंने डेफिनेटली सुनी है. वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज, जैसे हम कह रहे थे कि IFFI इज़ अ प्लेस जहाँ पे सबको कुछ ना कुछ मिलता है एंड एवरीवन कैन कम एंड प्रेजेंट देयर पिक्चर्स ऑल्सो. देयर वॉज अ गाय 22 ईयर ओल्ड. ही मेड हिज फिल्म, डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई है प्रदक्षिणा करके. इट्स अबाउट वन डे फिल्म जहाँ पे फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ दे डू देयर जर्नी इन वन डे एंड फिर हाउ लाइफ्स चेंज, हाउ दे चेंज, उसके बारे में था. तो द हाईलाइट ओवर हियर इज़ कि 22 ईयर ओल्ड फिल्म मेकर इज ऑल्सो देयर. बड़े बड़े नामचीन और ऑल्सो देयर. It's one platform where 22-year-old Prathamesh Mahalay is there and 79-year-old Michael Douglas is also there. So this is one platform. Documentaries के अलावा अगर आप ये भी इन कॉन्वर्सेशन की भी बात करें तो वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री को लेके इन कॉन्वर्सेशन सेशन था, इंडियन डॉक्यूमेंट्री ऑन वर्ल्ड स्टेज. सो वी स्पोक टू कार्तिकी गोंसाल्विस एंड वी ऑल्सो स्पोक टू रसूल पुकुटी. तो उन्होंने भी रोड टू ऑस्कर्स के बारे में ये बातचीत की थी. सो you don't have to make a film keeping in mind कि आपको अवार्ड जीतना है. You have to make a best film. You have to keep a simple film. Rest is history. Rest is journey. वो This अपने is आप really amazing. I totally second that opinion क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, फीचर नॉन फीचर फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती हैं. जैसा आपने बात किया कि 22 साल के एक लड़के ने अगर एक फिल्म बनाई है और उसको वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने का मौका मिल रहा है, उसको एक वॉइस मिल रहा है, उनको एक अपनी एक विजन शेयर करने का अवसर मिल रहा है. और साथ के साथ वो एक्सपीरियंसेस जो लोगों को 40-50 साल एक्सपीरियंस करने के बाद अपने आप एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो यहाँ पे मास्टर क्लासेस में, इंटरेक्टिव 1-to-1 सेशंस में, Q&A सेशंस में वो शेयर करते हैं और बहुत ही एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहता है. मेरे को लगता है कि किसी भी फिल्म फेस्टिवल में ये एक जो एस्पेक्ट होता है वो IFFI को जो बहुत स्पेशल बना रहा है वो यही है कि एक अमेलगमेशन है, एक मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे यंग टैलेंट्स का, सीनियर एक्सपीरियंस का, वेटरन्स का, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स एंड लोकल फिल्म मेकर्स. एंड वी आर इन दी 17th ईयर एज अ परमानेंट वेन्यू इन गोवा हियर. गोवा एक कमाल का, जिसे कहते हैं ना, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स में बात करते हैं टाइमिंग और प्लेसमेंट की. मुझे लगता है कि ये जो साल का जो महीना है नवंबर का, बहुत ही शानदार महीना है क्योंकि बच्चों के दिसंबर में एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं, तो उससे पहले का ये जो एक ब्रेक पीरियड चल रहा होता है, विंटर्स ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं और कमाल की प्लेसमेंट है. व्हाट प्लेस लाइक गोवा, नथिंग लाइक गोवा टू हैव अ फेस्टिवल ऑफ IFFI स्टैचर हियर. और एब्सोल्युटली, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भारत की विविधता है वो भी पूरी की पूरी तरह से हमें यहाँ पर IFFI 2023 में देखने को मिलती है. अगर हम बात करें रीजनल सिनेमा की, अपार्ट फ्रॉम द बिग बॉलीवुड मूवीज, यहाँ पर आपको भारत के हर प्रांत, हर क्षेत्र की सिनेमा को देखने का मौका मिला लोगों को. और साथ ही हमें देखने को मिले नॉन फीचर फिल्म्स और साथ ही लैंग्वेज फिल्म्स, बिकॉज अब भारत उस स्टेज पर पहुंच चुका है जब भारत का सिनेमा केवल हिंदी सिनेमा नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने से आने वाला सिनेमा भी भारत का सिनेमा है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है. সবকিছু বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়. तुम मुखातिब भी हो और करीब भी. तुमको देखें कि तुमसे बात करें. और जहां प्यार होता है वहां बंधन नहीं होता है. അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായിട്ട് എനിക്കത് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന. വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ 3ാം വാർഡ് ബൈ ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ I
അല്ല അതിനപ്പ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാന്ന് സമ്മതിച്ചോ? ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ശബരിമല കയറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നോളാണോ? എനിക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണണം. अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है. സോറി, യു കണ്ടിന്യൂ. ഫ്ലോ പോയി, ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. 4 പൊറോട്ടയും ബീഫ് തീർന്നുകൊണ്ട് താറാവ് റോസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് മുന്തിരി ജ്യൂസിന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കട്ടൻ ചായയും കുടിച്ച് കടവും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. കേസ് കൊടുന്നു. 50 വർഷം മുമ്പ് ഏതോ ഒരു കൊച്ചൗസേപ്പ് എഴുതിയ പ്രേമലേഖനോ. कीजिए साइन. ये क्या है? स्टेटमेंट. किसका? पुलिस वालों को शक हो गया. हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया. वध. பாலமண்டில் வைத்துக்கொள்ளதாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. And here we have on the red carpet the enchanting French actress Marianne Bogo. Bienvenue. Thank you so much, namaste. But I have to thank the festival IFFI, which has been this year a wonderful, wonderful year. And especially the Film Bazaar. I discovered plenty of young directors. And I was very happy to see my friend Shweta Bajag, who won the prize for a film, Work in Progress. And of course, the Salman Khan film, Fareh, was just unbelievable. And Tarka Singh was incredible. Well, I've seen this year fantastic, fantastic Indian films. So I'm totally refreshed and it's been a wonderful festival. So looking back at the 9 days of IFFI, you've been here throughout the festival. Which was one highlight for you? Well, of course, this morning, the master class between Shailendra Singh and Michael Douglas, which is really the resume of two different cultures, because Shailendra has produced 92 films and has created Sunburn, and Michael Douglas also had this incredible parcours. So, you know, suddenly it was a reunion of two cultures. Yes. And voila, cinema is dreams, and those dreams, through those dreams, you make bridges between culture and a better world. Absolutely. And that is what IFFI 2023 is all about, with its theme of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, isn't it? You greeted me in Hindi saying namaste, and I greeted you in French saying bye, bienvenue. Merci. Merci. And also thank you to Pramod Sawat for organizing this wonderful festival, to IFFI, and to your minister, Mr. Thakur, and to all the team, which has been amazing. So congratulations. Thank you, Marianne, for joining us. Over there, these wonderful people who are the one from the UNESCO. Oh, yes. They are doing a lot of things for the world. And a compliment, your bindi is beautiful. Well, it's something I learned from Indian culture. And when I put my bindi, I feel connected to the gods. Wonderful. Thank you, Marianne, for joining us. Merci beaucoup. तो ये था IFFI का सफर, जहां सितारों ने इस महफिल को सजाई है. चलते हैं अक्षय के पास. Well, just a while ago, my colleague Satyapriya and I were talking about the UNESCO ICFT medal, and I'm lucky to have on red carpet here with me John Thornblad, the director of the film, and John Febelstrom, the producer of the film called The Sugar Experiment, which has been nominated in the UNESCO ICFT medal category. And before I wish them luck for their award, let me go across them and have a word with them. John, thank you for taking time out. Good to have you on the red carpet. So thanks you so much for having us. We've been enjoying this festival so much. You know, in the last 10 days or so has been very exciting. I'm sure you had a good time here in Goa. Yes, we had a really, really good time here, participating in the festival, seeing films, meeting new people and everything. So it's been lovely so far.
John, please tell our viewers on Doordarshan a little bit about your film, The Sugar Experiment that you made, which is nominated in this category. What this film is about, and how did you go about this idea? I believe it's a very difficult theme to execute. Yes, the idea came from when we heard a radio documentary about this subject, and both me and Johan heard it in separate ways. And when we were discussing what new film are we going to do, and that was the first thing that came to our mind. And the film is about a young couple that lives in a mental institution in the 1948s in Sweden. And so they make an experiment in this institution where they give sugar to the people who are like intakes there or in this institution, and they see if they get hole in their teeth or not. And of course they do. So. And Johan, you as a producer, when you came on board, was it like good for you, easy choice to make as a producer? Yeah, of course it's difficult to do like historical movies like this with costumes and props and everything with this. And another thing is to work with people with disabilities, because the movie is about people with disabilities. We wanted to do it together with them, and so they could tell their own story. So that was the most challenging, I would say. Yeah. All right, John and Johan, both of you, you've been absolutely sensational. Thank you so much for talking to us. We have an exciting closing ceremony lined up. We're not going to keep you waiting here. Please enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. Thank you. We're really looking forward to it. It's a good way to run out the trip. Thank you. Akshay, thank you so much. And here now on the red carpet, we are joined by two distinguished guests. I welcome, bienvenue, Monsieur Serge Michel, Vice President ICFT UNESCO, and Johan Hung, PCI Director and Jury Coordinator, ICFT UNESCO. Bienvenue. So how was the 9-day-long journey and ICFT UNESCO talking about movies which concern children, which concern peace and goodwill? So what kind of cinema did you get to see here? And which concern all subjects in actuality, yes, and films are very interesting, of course. And we offer here a special prize, the Gandhi Medal. It's a symbol. Yes. And IFFI has selected 10 films, and we have choose, with a jury, we have choose one of these films, and the winner will be announced during the closing ceremony. Yes, you also have the medal that will be presented to the winners. Can our viewers see this? This is the coveted medal that the films are competing for, the ICFT UNESCO medal here. Yeah, you know, the ICFT is the International Council for Film, Television and Audiovisual Communication, and it's a partner for UNESCO. Yeah, and it's why we give this UNESCO medal with Gandhi. Yes. So you said that there were 10 films which were competing for this. I mean, you had seen 10 films. So out of these 10 films, what was the most important criterion for selecting the winner? The criterion are the criterion of non-violence, tolerance, peace, all criterion which are in the heart of UNESCO, and also in Gandhi symbol. Yeah. Yes. Talking about you, so you had also watched all the 10 films, did you? Not this time. This time I worked as a jury coordinator. I was a jury member last year, so we change jury members every year to have a more diversified choices. So I'd love to watch all the film after I'm going back to Paris, because it was a lot of job to do for the coordinating too. So yes, we have we make an international jury with 5 members, and the members receive the film and then have discussions about, because it is interesting in a jury to have discussion about the film, about topics and so on, and finally to choose one of the 10. Wonderful. Thank you. Thank you so much for joining here on the red carpet. Thank you so much. Over to Akshay.
Well, thank you, Satyapriya. And a beautiful Bulgarian film, Blagger's Lessons, has been screened here at the 54th IFFI. And I'm lucky to have the lead actress, Ali Skotcheva, with me. Ali, welcome to the closing ceremony of 54th IFFI. Церемония, как се чувстваш? I will translate her. I'm happy. And аз съм доволна от това, че от реакцията на индийската публика. We are very happy because we meet the Indian audience and they accept the movie very good. We worry how they're going to accept the movie. So they understand the story, I think so. We think so. Absolutely. Filmmaking is a universal language. Obviously, we have enjoyed you watching your film. The response has been good. Can you repeat the question, sorry? I said, obviously, the universal language of cinema doesn't need any translation. We love the film. Obviously, the response was good here. You happy with the response you got for your film? Да, аз точно това казах, че това ме направи най-щастлива. Yes, that's what she said, that makes her happy very much. Това, че филма беше разбран. For us, it was very important to understand the movie because it's a very local story about people in Bulgaria. So this is very different culture. Yeah. All right, it's been amazing talking to you. Thank you so much for talking to us. Enjoy the closing ceremony here. Thank you very much. Thank you very much. Such a pleasure it is to talk to these an international filmmaker. तो अगर बात करते हैं सिनेमा की, तो जितना ज़रूरी होता है उसमें पॉजिटिव किरदार यानी कि हीरो का किरदार, उतना ही अक्षय, आई एम श्योर आप मेरे से एग्री करेंगे, उतना ही ज़रूरी होता है नेगेटिव किरदार यानी कि विलन्स, क्योंकि विलन्स ही वो किरदार हैं जो हीरो को हीरो बनाते हैं. व्हाट डू यू से? Well, I totally agree with you, Satyapriya. मैं तो खुद एक फिल्म बफ हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं रहता कि फिल्म का हीरो कौन है या उस तरह से. मैं सभी एक्टर्स को देखता हूँ और फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग का जो नैरेटिव होता है, मुझे लगता है वो विलेंस उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं. और कमाल की बात है, इस बार इफ़ी में हमने एक स्पेशल सेक्शन उन विलेंस को डेडिकेट किया है और अमेजिंग विलेन जिनसे हमें डर लगता था, उनसे 1-to-1 लोगों को बात करने का मौका मिला. उन्होंने इंटरेक्टिव सेशंस किए यंग फिल्म मेकर्स के साथ, फिल्म लवर्स के साथ. लेकिन खास बात अक्षय ये है, अगर हम खासकर भारतीय सिनेमा की बात करें, जितना प्यार लोगों का लीड एक्टर्स को मिलता है यानी कि हीरो को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार कई बार विलन्स को मिलता है. और इस बात का टेस्टमेंट, इस बात का सबूत है कल का सेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो सेशन कंप्लीटली हाउसफुल था. लोग अपने फेवरेट विलन, चाहे रंजीत जी हो या किरण कुमार हो या द बैड बॉय गुलशन ग्रोवर हो, उनको देखने के लिए तांता लगाकर खड़े थे और पूरा हाउस फुल था, एब्सोल्युटली फुल. आई टोटली एग्री विद यू. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह का कनेक्ट उन लोगों का अपनी ऑडियंस के साथ है, दशकों से वो फिल्म में रोल कर रहे हैं, भले ही नेगेटिव किरदार हो या उस तरह के पैरेलल लीड्स हो, एक रिचनेस देते हैं वो फिल्म के नैरेटिव को. और मुझे लगता है कि बिना उनके तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी. फिर कहानी एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक आगे बढ़ेगी, लेकिन अंजाम तक कैसे पहुंचेगी अगर उसमें कोई विलन नहीं होगा. बिल्कुल. तो कैसा रहा कल का ये इन कॉन्वर्सेशन विद द विलन्स ऑफ बॉलीवुड? आइए देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट में. मैंने अपना टेलीविज़न करियर जो है वो दूरदर्शन शुरू किया था और दूरदर्शन हमेशा मेरा बहुत ही फेवरेट चैनल रहा. और अगर आपको याद हो, घुटन एक सीरियल किया था जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, वो भी दूरदर्शन का ही सीरियल था. फिर मेरा एक शो चलता रहा, काफ़ी अरसे तक चला, डिटेक्टिव करण. वो आज भी जब भी लोग मुझे मिलते हैं दूरदर्शन देखने वाले, तो हमेशा याद करते हैं कि डिटेक्टिव करण को हम बहुत मिस करते हैं. लोटिया पठान जब देता है तो कोई एहसान नहीं करता, और जब लेता है तो कोई लिहाज नहीं करता. तो जो भी यहाँ आता है उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी फिल्में देखने की. प्लस फिल्म जो है ग्लोबल फैमिली है. ये सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है. वी आर ऑल हियर. कुछ पेरू से आए हैं, कुछ फ्रांस से आए हैं, कुछ जर्मनी से आए हैं, कुछ यूएस से आए हैं. हम सारे के सारे मिलके ना एक परिवार की तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस फेस्टिवल का मज़ा लेते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है. इट्स वंडरफुल टू कम हियर. फिल्म है, वो टीवी हो, वो वीडियो हो, वो सीडी हो, वो ओटीटी हो, वो टीवी सीरियल्स हो. फिल्म का जो क्रेज़ है
वो कभी खत्म नहीं होगा। विशंबर, हीरे बेचने वाले लकड़ी के डब्बों की कीमत की परवाह नहीं करते। लखन हमारा हीरो है और इसको मायूस करना अपने धंधे को नुकसान पहुंचाना है। लाइफ में यार चेंज इज ऑलवेज देयर। जब हम लोग आए थे 55 साल पहले तो पिछले किसी और सब्जेक्ट्स जो होते थे सोसाइटी के अलग होते थे। मैं जब पहली बार आया था मेरे हाथ में एज ए विलन वो एक चाकू होता था, तर 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 खुलता था। उसके बाद में बटन दबाने वाला आ गया, उसके बाद में वो क्या नाम गन्स आ गई, फिर मशीन गन आ गई, फिर राइफल्स आ गई। तो ये ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड सो द कैरेक्टर्स आल्सो, द राइटर्स आल्सो। जो बिकता है वो लिखते हैं, प्रोड्यूसरों को अच्छा लगता है वो बनाते हैं, और जो उस कैरेक्टर में सूट करता है उनको लेते हैं। तो ये था IFFI 2023 के इन कॉन्वर्सेशंस में हमारे बैड बॉयज यानी विलन्स के साथ हमारी बातचीत। और अब रेड कार्पेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान। मैं स्वागत करना चाहूंगी उत्पल बोध पुजारी जी का। आप OTT अवार्ड्स के भी ज्यूरी मेंबर हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप खुद 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, और ऐसे में जब आप OTT के कंटेंट को जज करते हैं तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर? See, OTT स्पेस में अभी कंटेंट हैज़ एक्सप्लोडेड एज वी नो लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि ये जो अवार्ड यहाँ पे इस बार से शुरू किया जा रहा है, और उसमें आप कंटेंट का क्या व्हाट्स दैट वन थिंग वी आर लुकिंग फॉर एज अ जूरी व्हिच इज चेयर्ड बाय आवर रेस्पेक्टेड मिस्टर राजकुमार हिरानी जी, एंड वी हैव कृष्णा DK, Prasenjit Chatterjee and Divya Datta ji as members. The one thing, actually there is not one particular thing, but overall we look for good content, content that is very that speaks about our stories, Indian stories, and it represents India in a sense, and stories that we can take pride in, the storytelling styles, the treatment. It's like how cinematic the treatment is overall. बात करते हैं कंटेंट की, तो उत्पल जी आज का ज़माना, आज की फिल्म मेकिंग की बात करें तो आज का जो फिल्म मेकिंग है केवल नैरेटिव या स्टोरी लाइन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इतनी सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद आपको इतना सब कुछ देखने को मिलता है। आपके पास VFX हैं, AR है, VR है। तो जब आप एज अ ज्यूरी मेंबर किसी फिल्म को देखते हैं तो क्या आप इन एस्पेक्ट्स का भी ख्याल रखते हैं, और डू यू थिंक दैट द कंटेंट, द स्टोरी, द नैरेटिव इज द किंग? Yeah, see, I mean, whatever platform it might be, जो भी हो प्लेटफॉर्म या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया हो, अल्टीमेटली सिनेमा इज़ अबाउट कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग। सो वही हमेशा प्राइमेसी उसी का रहेगा, और उसके साथ जो हाउ वी यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, दैट ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ पॉजिटिवली वी हैव बीन एबल टू यूज़ दैट। एंड हम लोग जो OTT का जो वर्ल्ड वाइड जो सिनारियो है उसके साथ हम लोग कितना कम्पीट कर पा रहे हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एंड इन इंडिया अभी जो OTT स्पेस इज स्टिल ग्रोइंग एंड स्टिल इवॉल्विंग। सो दैट्स वाई आई थिंक जो हमारी जूरी की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि हम लोग उस टाइप का जो एक इंडियन आइडेंटिटी वाला जो कंटेंट है उसको जैसे हम लोग अगर बाहर का साउथ कोरियन कंटेंट देखें या किसी भी कंट्री का देखें तो उनका एक अपना एक आइडेंटिटी होता है स्पेसिफिक, इसलिए पूरा दुनिया में पॉपुलर होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इंडियन स्टोरी टेलिंग एंड इंडिया की ब्यूटी ये है कंटेंट की कि वी हैव such diverse content in so many languages. Absolutely. So the message is कि अगर भारतीय फिल्म मेकर हैं तो वो अपनी भारतीय आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखें अपने फिल्मों में। Thank you so much उत्पल जी for joining us. Over to you, Akshay. All right, so we are talking about the opening film, we are talking about the closing film. I'm lucky to have Nouri Jailan with me. He's the director of the Midwest film, The Amazing About Dry Grasses. Nouri, thank you so much for taking time out. Please tell our viewers a little bit about your film and your experience here in the IFFI in Goa. It's my first time here in Goa. I liked it very much, but I've been in India many times actually. And in this festival, I'm coming for the first time. I think it's a long festival, yeah, about 20 years. Yeah, I've been in Calcutta and also in Kerala and in Delhi in festivals. I like India.
It is the oldest film festival, the largest film festival. We are in the 54th edition here, and we are so lucky to have you here as the Midfest film. Please tell our viewers about the Dry Grasses that your film, Midfest film, that share your thoughts on that. It's a long film, actually, more than 3 hours, and it's about a teacher who making social service in the east of Turkey. I made it from the diaries of a teacher. It's based on a real story, actually, and most of the film is taking place in a snowy part of Turkey, and. The title reminds me of Walt Whitman's famous book, Leaves of Grass. Yes, but we see the summertime at the end of the film only. Yeah. All right, Nuri, thank you so much for talking to us. Enjoy the closing ceremony here. And it's time to go to Satyapriya once again. What she's up to, let's find out, Satyapriya. Thank you, Akshay. Thank you. And now we have on the red carpet a very distinguished guest. We welcome Mr. Guillermo Rodriguez from Spain. You are heading the Spanish delegation here at IFFI 2023. Looking at the relationship that India and Spain have had all these years, and especially through films, what would you say about that? Well, it's a very important moment. I think it's a crucial, game changer that India has approved new incentive schemes for co-productions. We signed a co-production treaty, which we are reviving now, and we are looking forward to collaborations such as festivals which can host co-productions. Most importantly, last year, Carlos Saura got the Lifetime Achievement Award. Satyajit Ray was one of his icons, and it was an honor for him to receive it. His daughter came, Ana Saura. We had a very strong Spanish delegation, and because of that, I'm happy to announce that on 1st of December at the National Museum of Indian Cinema, Mumbai on Pedder Road, we are hosting the Carlos Saura exhibition called Flamenco India. It had been his dream to do a film in India, searching for the roots of flamenco. He photographed everything, he prepared all the sets. We're showing that exhibition. It's the first time that the National Museum that is hosting the exhibition is having such an exhibit on a non-Indian filmmaker. So this is going to happen on 1st of December. We invite everyone to come at 11 a.m. And there's a surprise, there's going to be a flamenco show also. Wow. So I think India and Spain have very strong, deep bonds, and it's through dance, through music, and the films of Almodovar that everybody loves here, and of course Saura, and we have a similar language of understanding stories. And we are very confident there will be big new projects coming up. Bollywood is already coming to shoot in Spain, and it's not just Zindagi Na Milegi Dobara, but so many other films. And how do you see, and how does the Spanish film industry see India as a destination for their films? Oh, we also do that. We have an agreement. Our institution is Casa de la India, the Indian Cultural Center in Spain, which was set up by the Government of India with the local partners of the city of Valladolid. And we've hosted in the recent years delegations coming to India as well. Recently there was a film shot in the Himalayas. It's called the Valley of Shadows, and it was shot entirely in Himachal Pradesh with some of our stars from the Netflix series Money Heist. And they have shot there just now. So India is becoming increasingly more popular to shoot here, and Bollywood shootings in Spain. Now the next step is to have joint co-productions. Thank you. Thank you so much for joining us on the red carpet. And thank you for giving the wonderful news for all the cinephiles here in India to go and watch the exhibition in Mumbai starting 1st December. Thank you. Sure. Very soon. Over to you, Akshay. Satyapriya and I, we've been talking about the closing film, the much-awaited The Featherweight, and I'm so happy and so lucky to have with me on the red carpet here the team of Featherweight, Robert Lodney, the director, and his team. Robert, thank you so much, and lucky to have you here. Thank you so much. We're honored to be here. IFFI is an incredible festival. To be the closing night film in its 54th year means the world to us. And to have our team, our lead actor James Matty, our producer Bennett Elliott, and our screenwriter and producer Steve Loft, means the world to us to be able to engage with international audiences and show our film. I tell you, we had been talking about this film. Obviously, all the films that have been selected at the 54th IFFI have been amazing. Your film, The Featherweight, being the closing film, amazing feat and amazing, it's an amazing feeling to be the closing film of a film festival.
It is. You know, it's the first time I've ever been the closing film of a film festival, and it means the world to me. You know, and I think our film, I hope audiences related to it, and it ends with a punch, so it's a good way to close out a festival. James Madio, as the lead actor of the film Featherweight, what's been your experience like of the film and also screening your film in Goa here? Well, it's pretty remarkable and special to be here amongst you all and all this talent and beauty at this prestigious festival. I'm pretty humbled, to say the least, and to be the close of night as well, and to be here with the team, it's pretty special. A difficult film, both of you as actor and director and producer, all of you can have a word about it. You know, setting in the 1960s as a period film, also dealing as a sports drama, biographical, autobiographical film, difficult theme to handle. It's an exciting ship to helm. You know, working in a period piece, the 1960s in America are a fascinating time period, and the genre of boxing and sports films is just incredible to focus on. So lovely to have you. I'm not going to keep you waiting here because we have an amazing, exciting closing ceremony lined up. A lot of music, a lot of dancing, a lot of amazing awards there. Please go ahead. Thank you so much for talking to us. And it was a pleasure having your film here in IFFI. Please go ahead. The team of Light Feather here. बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम यहाँ रेड कार्पेट पे स्वप्निल जोशी जी का। स्वप्निल जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ IFFI की क्लोजिंग सेरेमनी में? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। IFFI की एक खास जगह है मेरे दिल में। बहुत सारे उम्दा फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं हमारे देश में, बट IFFI इज़ ऑलवेज स्पेशल। पहली बार मेरी कोई फिल्म किसी फेस्टिवल में जब सिलेक्ट हुई थी तो वो IFFI में थी। दुनियादारी वाज दैट फिल्म, एंड सो IFFI is and will always be very very special. Also IFFI गोवा में होता है, so IFFI का और गोवा का अपना एक कनेक्शन है, तो यहाँ आना, you know, to soak in the entire festival vibes, बहुत मज़ा आता है। अगर IFFI 2023 की बात करें, आपने बहुत क्लोजली पूरे फेस्टिवल को फॉलो किया है, आपके लिए पर्सनली इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा? काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब मैंने पहली बार एक हिमाचली कंटेंट देखा, जो उनकी भाषा है, उस भाषा का कंटेंट देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, मतलब क्योंकि इतनी विविधता है हमारे देश में, इतनी भिन्नता है, एंड देन यू नो टू नो कि वहाँ कैसी चीज़ें बन रही है, वहाँ कंटेंट कैसे बनता है, क्या क्या कंज्यूम होता है, टू अंडरस्टैंड कि उनके कल्चर की वाइब्स इन टर्म्स ऑफ सिनेमा क्या रिफ्लेक्ट होती है। बहुत मज़ा आता है ये सब जानने में, देखने में। यू गेट टू मीट पीपल, यू गेट टू मीट योर आइकॉन्स। एक जैसे मास्टर क्लास हुई थी ऑन ऑल द यस्टरईयर विलन्स, सो जस्ट टू हियर ऑल दीज आइकॉनिक पीपल टॉक ऑन स्टेज एंड हाउ कैसे उन्होंने काम किया एंड कैसे वो इस रोल को अप्रोच करते थे, सो फॉर एन एक्टर आई थिंक वेरी एनरिचिंग। आपने मराठी सिनेमा में बहुत काम किया है, अगर IFFI की बात करें तो क्या आपको लगता है कि IFFI ने वाकई जो एक पहले रीजनल और सो कॉल्ड नेशनल सिनेमा का डिवाइड था, उसे किसी न किसी तरह से तोड़ा है? उसे आई थिंक तोड़ने में मदद डेफिनेटली की है, बिकॉज आई थिंक विद टाइम इट्स ओनली इंडियन सिनेमा, एंड बहुत गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि ये भारतीय सिनेमा है, इस इंडियन सिनेमा। हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती है, हमारी बोली अलग अलग हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियन सिनेमा। सो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ अलग अलग स्टेट से फिल्में, उनका कंटेंट, शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, एंड अल्टीमेटली हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं ना कि ये हमारा इंडियन सिनेमा है। सो you get to see the world cinema, you get to see Indian cinema, and then you also get to see that we are doing so much better in terms of world cinema now. We are out there and the world is watching us. तो जिन ऑस्कर्स के लिए कभी हम तरसते थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि हमारी डॉक्यूमेंट्री ने भी कमाल मचाया है और उसे ऑस्कर से नवाजा गया, और स्पेशल सेशन रहा द रोड टू ऑस्कर्स पर। तो आपको लगता है दैट इंडिया हैज एक्चुअली अराइव्ड एट द ग्लोबल स्टेज नाउ? I genuinely feel, और मैं बहुत, आई एम वेरी प्राउड इंडियन, मैं बहुत फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि आने वाला समय भारत का होने वाला है। मतलब नॉट दैट हमारा समय नहीं था, हमारा समय था ही, बट आने वाला समय इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट इंडिया। द वर्ल्ड इज गोइंग टू टॉक अबाउट अस। ऑब्वियसली, और जब कृष्ण के मुंह से ये बात निकली है तो कैसे ये झूठ हो सकती है? आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई विल ऑलवेज बी अ प्राउड इंडियन। तो इट्स वेरी हम्बलिंग टू सी जब ऑस्कर के स्टेज पे आपके देश का नाम पुकारा जाता है, एंड अ फेलो इंडियन गोज एंड रिसीव्स एन अवार्ड, एंड फेलो इंडियन टॉक्स अबाउट इंडिया एंड फिल्म मेकिंग एंड इंडियन सिनेमा। ऐसा लगता है हमको अवार्ड मिला है। और
We are all one. Absolutely. और बहुत सारी गोपियां यहाँ पर हैं, इंतजार कर रही हैं आपके साथ सेल्फी लेने के लिए. Thank you very much. Over to you, Akshay. The International Film Festival of India is only getting bigger and bigger even as we inch towards the closing ceremony. Two of the most amazing films, The Lonely Yurt and Snowstorm. I have the producer of these two amazing films with me. Let me go across them and find out about their experience. You know, one of the film has been a world premiere and one of there has been the international premiere here. What has been the response like premiering your film at the IFFI in India? I will translate to him because Please do. Speak English. So, ол сұрап жатыр да, қалай сізді қарсы алды? Рахмет, 54-ші Индия халықаралық кинофестивалына бізді жаңағы өте жоғарғы деңгейде қарсы алды деп ойлаймыз. Адамдардың кішіпейілділігі, адамгершілігі, сондай-ақ кино өнеріне деген тазалығын бойларынан көруге болады. He's very happy that this festival, 54th International Film Festival, invited his movie. He's very happy to present this, and he's very happy with the people who actually were very friendly and kind. So he thanks for this. The film, obviously, as you talked about the Lonely Yurt and the Snowstorm, obviously, you know, amazing opportunity for Indian viewers to watch these films, which usually do not get the release here. And for you as well, you know, premiering a film in a massive country like India here, you know, showing it almost to the half of the world. Yeah, it is actually really great experience, I guess, for us, because it's a good opportunity to, as you said, to show almost for half of the world. And the Indian people so kind, and they actually liked very much our movies, and they said many good warm words about both of our films. So thank you so much. We're very happy. Thank you so much for talking to us, ma'am. Thank you, sir. There's a lot more lined up for you even in this closing ceremony. Please go ahead, enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Yeah, sure. Pleasure. Thank you so much. Enjoy the evening, sir. It's time to go to Satyapriya. Let's see what she is up to. It's been absolutely scintillating, sensational and exciting. Satyapriya, over to you. थैंक यू अक्षय. और हमारे साथ हैं वाणी त्रिपाठी टिक्कू जी. आपसे ये जानना चाहेंगे कि IFFI 2023, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा फेस्टिवल इतनी सक्सेसफुली इसको पूरा किया है. आपके लिए पर्सनली क्या हाइलाइट्स रहे और जो कुछ नया आपने सोचा था कि इस बार इस फेस्टिवल में इंक्लूड करेंगे, तो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से उसे निभा पाए हैं? देखिए, हमारे प्रजातंत्र की तरह जैसे जैसे हमारा जनतंत्र बढ़ता है, हमारे उत्सव और हमारे समारोह भी उसी स्तर पे बढ़ते हैं. तो आज ये कहा जा सकता है कि अपने 54th ईयर में ये तो नहीं कहूँगी कि आधी अवस्था में है, लेकिन फेस्टिवल पूरी परवान पे है. हम टीम में काम करते हैं. गोवा की ESG हमारा इक्वल पार्टनर है और हर साल की तरह इस बार भी हमने पूरी तरह बांट कर काम किया. पूरी स्टीयरिंग कमेटी, प्रोग्रामिंग कमेटी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ESG गोवा, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समावेश है और उसी समावेश को आपने मूर्त रूप से होते हुए देखा. जहाँ तक समारोह फेस्टिवल का सवाल है, मुझे लगता है बहुत सारे नए पहलू, नए रुख हम फेस्टिवल को इस बार दे पाए हैं. हम अगर बाज़ार की बात करें, फिल्म बाज़ार की, तो हमने पेज टू स्क्रीन लॉन्च किया, जहाँ आपने देखा कि लेखक प्रोड्यूसर से सीधा संपर्क करने में कामयाब रहे. अक्सर ये बात होती है कि लेखन प्रक्रिया करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन फिल्म निर्माता उन तक नहीं पहुंच पाते, या वाइस वर्सा, फिल्म निर्माता बहुत हैं, लेखकों तक वो नहीं पहुंच पाते. हमने इतनी बड़ी टेक लैब शुरू की. हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गूगल के कि उन्होंने अपना आर्ट्स और कल्चर पेज ही आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ यहाँ से हुआ. और टेक लैब में आपने VR, XR, एनिमेशन, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, इन सब को पूरी तरह से आपने मूर्त रूप से देखा. तो मेरे हिसाब से फेस्टिवल हर साल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और ग्लोबली भारतवर्ष का इस वक्त जो डंका है, RRR को ऑस्कर मिला, एलिफेंट विस्परर को ऑस्कर मिला, उसकी भी बहुत बड़ी प्रतिछाया आपको इस बार फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिली.
एक बार फिर इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब विश करना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द रेड कार्पेट. थैंक यू. और मैं दूरदर्शन के सब दर्शकों को कहना चाहूँगी कि जिस तरह हर साल दूरदर्शन हमें कवरेज देता है और जिस तरह दर्शक वर्ग हमारे साथ हमेशा सम्मिलित होते हैं, जुड़ते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. ओवर टू यू अक्षय. तो ये था इफी 2023. सितारों का लगातार यहाँ पर रेड कार्पेट पे आने का सिलसिला जारी है. मैं और मेरे सहयोगी अक्षय लगे हुए हैं कि आप तक इफी की सारी हलचल यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में पहुँचाते रहें. और अक्षय अब जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमानों के साथ. और अक्षय, आप किन से मिलवाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? Sensationally excited and delighted to be here now with the international jury, with the chairperson Shekhar Kapoor and his jury member, his team joining us from different countries. Shekhar ji, so good to have you here. It's great to be here. Thank you very much. Thank you. Well, we were just having a word with them. You know, it's not an easy process, obviously, going through so many thousands of films and zeroing down on last touch to the, some 10 odd films. Not an easy process. Well, we didn't have to go to thousands. We went a few, but even that's a very difficult process because it's very simple. It's very tough making a film, very tough. And then, so you have to look at every film and look at the intention of the director, and you have to give to the director the fact that it was so tough to make that film, and then you have to judge it and give it all the respect that you can. So that's the job of the jury, to look at every part of the film. And then to choose between those two is very tough. Between all those, it's very tough to choose. Yeah. It's a very difficult job to be jury. Talking to the rest of the jury members, obviously, as Shekhar sir has pointed out, it's not an easy job, very difficult to, but, putting the best of the world cinema for Indian audiences here, amazing experience to be part of jury here. Very much. The hospitality is enormous, and going to the public screenings, they're very well supported. So there's a real buzz in town because of the festival, and it will engender a lot of interest in the film industry across the country. And the response has been tremendous. People have received the footfall of people, the screenings, the master classes. Obviously, amazing festival we were having. Yes, the selection of movies in all the festival is really wonderful, and it covers a lot of diversity of movies, which is very interesting. And let me go across to other members of the jury. We're talking to people in the jury. Not an easy job, but amazing feat to be able to put those films in front of Indian audiences, and in a place like Goa, tremendous response. Film lovers here have responded well to the festival. Yes, and we have a beautiful tour of the world for 1 week, and a beautiful tour of the world with the jury, which is coming from all over the world too. We are literally showing these films to almost to the 1/3 of the world here. So that's what makes the Indian films, showcasing films in India special. Yeah, I had the chance to go in a public screening, and it's wonderful to see these big theaters absolutely full of film enthusiasm. So I think, it's a very good sign of the energy we can feel here. And Shekhar sir, obviously, looking at the journey of IFFI not only, but Indian cinema going global here, how do you look at the evolution of Indian cinema year after year, especially IFFI as a tool, as a catalyst? It's very important for it to go global. I think cinema is an international idea. It needs to go global from everywhere in the world because there's so much conflict in the world, and we really need to tell each other our stories through cinema. And if we don't tell each other our stories, then we won't know each other. And through telling of stories, we find a certain humanity in every culture's stories. So it's really important. The cinema from here goes everywhere else. आपने बीच में during the course of the festival ये बात भी कही थी कि India has abundance of themes, in terms of its cultural diversity, and as boasting the international global filmmaking as a technical prowess, amazing input as Indian filmmaking industry. We can be part of this whole cinematic journey. Yeah, we are a land of storytellers. And we are, everywhere you go, somebody says, I walk into a lift and somebody tells me a story. I go anywhere in India, you go there, if I walk into a village, they'll tell me a story. We just express ourselves through stories. That's how we express ourselves. And certainly in Mahabharata, all the stories combined in one huge story.
And sweetheart, how's been your experience here? You've been attending the entire festival, or you've just joined that? I've been here since the beginning. I've loved it. It's been so much fun. My first time on one of my first times on a red carpet, so I'm a little bit nervous, but it's been really exciting. And I've met so many amazing people. And yeah. Lovely talking to you. Thank you so much, the respected jury, talking to us. Enjoy the evening. We have an amazing lineup here. The international jury, the chairperson, and other members here. थैंक यू अक्षय। और हमारे साथ यहाँ रेड कार्पेट पे हैं वो कथाकार, वो कहानीकार जिनकी कहानियों से सभी लोग जितने भारत में हैं, जो रेडियो सुनते हैं, जो इंटरनेट देखते हैं, उनकी कहानियों से उनके घर सजे हुए हैं। स्वागत करते हैं नीलेश मिश्रा जी का। और आपके साथ है आपकी नन्ही सी बेटी वैदेही। वैदेही, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड कार्पेट पे मुझे लगता है कि आप सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं, क्यों? अच्छा, अगर 2 लाइनों में कोई छोटी सी कहानी सुनानी हो पापा की तरह, तो क्या सुनाएंगी? एक बार आप और आपके दोस्त, हाँ, एक जलेबी का जंगल और मेरे दोस्त जो आए थे मेरे साथ। एक जगह जहाँ पर जलेबी का जंगल था। वहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे मेरे साथ, तो हम जलेबी खाते थे। तो जलेबियों को पकड़ती कैसे थी उछल उछल कर? हमारे पास सब वर्ल्ड में सब कुछ जलेबी ही था, तो हमें पेड़ पे उछल के जलेबी लेनी होती थी। ऐसे ही हर जगह जलेबी होती। क्या बात है, यहाँ पर भी एक कहानी है जिस पर फिल्म बनाई जा सकती है, क्यों नीलेश जी? मुझे लगता है कि बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों का जो बचपन है वो इसी तरह से ऐसे अनुभवों के साथ पलता है। और ये आज जहाँ मैं आया हूँ IFFI में, और जब भी आता हूँ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग कल्चर्स का जो एक प्रतिबिंब है ये। मैं कई युवा फिल्म मेकर्स से मिला, जो कोई गोवा से है, कोई कलकत्ता से है, कल मैं चंबल से किसी से मिला, और जो वहाँ की ज़मीन, वहाँ की भाषा, वहाँ की कहानियाँ लेके आए हैं। और मैंने पूछा भी कि कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए ग्वालियर में बैठ के यहाँ शामिल होना, और उन्होंने बताया कि इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस, इट वाज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अद्भुत है ये समागम, ये फिल्मों का महाकुंभ। सच में अद्भुत है ये समागम, ये फिल्मों का महाकुंभ IFFI 2023। चलते हैं अक्षय के पास, जो है एक बेहद खास मेहमान के साथ इस रेड कार्पेट पे। Well, what do I say and how do I introduce this amazing gentleman? Rishabh Shetty needs no introduction. The man has been sensational with his beautiful film Kantara that has struck chord with the entire nation. And lovely to have you, Rishabh, on the red carpet at the 54th IFFI. Thank you so much. Well, there's so much to say, there's so much to talk about. Your film has touched everybody. It's a beautiful film. The content of the film, cultural ethos of the film, the contemporary theme of the film. Amazing to have you on IFFI. I mean, please talk about your journey. तो पहला एक तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आई थिंक 2002 या 3 में पहली बार मैं टीवी पे आया था, वो दूरदर्शन में। सो बेंगलुरु में कॉलेज में था उस समय, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते, तो उस इधर आके एक माइम शो किए थे और कुछ स्किट किए थे मेरा सारे टीम। सो दैट इज़ द फर्स्ट मेमोरी विद दूरदर्शन। सो आज हम इतनी साल के बाद IFFI में मैं आप लोगों को मिल रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। Rishabh, Doordarshan is delighted, the entire nation is delighted. Your film has touched everybody, and so lucky to have you here on the red carpet. Amazing festival. Have you attended other films also? You've been attending master classes, have been interacting with a lot of young filmmakers. No, मैं कल रात ही आया, so CM साहब को मिला, सर सुबह उठ के सीधा कांतारा शो थे, उधर जाके ऑडियंस से इंटरेक्शन किया था। लास्ट टाइम एक सेशन भी था, तो उधर कुछ लास्ट ईयर उधर कुछ इंटरेक्शंस किया था। तो लास्ट टाइम तो आए हम लोग पूरे प्रमोशन में बिजी थे, और वी आर हेडिंग 50th डे टुवर्ड्स 50 days कांतारा। सो आई वाज अ गेस्ट इन IFFI। तो मैं सोचा भी नहीं था इस बार कंपटीशन सेक्शन में कांतारा सेलेक्ट होगा और 15 फिल्म में हमारा भी फिल्म होगा करके। सो दैट इज़
proud moment, and thank you, IFFI. Thank you so much for talking to us, Rishabh. Thank you so much. Pleasure to have you here. Enjoy the evening. We have an exciting lineup. Go ahead and enjoy the evening. Thank you so much. That was Rishabh Shet. और ऋषभ शेट्टी जी के बाद यहाँ पर रेड कार्पेट पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे किरण कुमार जी का। इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, साथ में है शौर्य। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। किरण जी, कल के सेशन की बात करें, इन कॉन्वर्सेशंस विद द विलन्स ऑफ द इंडियन सिनेमा, फुल हाउस, जहां आमतौर पे ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी मोहब्बत जो है वो हीरो के लिए जाएगी, यहाँ सारी की सारी मोहब्बत दर्शक सिर्फ विलन्स के लिए उंडेलते जा रहे हैं। कैसे कैसे करते हैं आप ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नायक और खलनायक में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब नायक के नाम के आगे आप खल लगाएं तो खलनायक हो जाता है। और खलनायक होना एक, देखिए, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमने हमेशा एक रिलेट किया है, मैंने पर्सनली विद माय ऑडियंस, विद माय व्यूअर्स, और मैंने लीडिंग रोल भी किए, मैं हीरो भी रहा हूँ, मैंने विलन्स भी किए, मैंने कैरेक्टर एक्टर्स भी किया हूँ। और अब जब जैसे हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो दूरदर्शन में तो मेरी टेलीविज़न की शुरुआत ही दूरदर्शन के सीरियल से हुई थी, और दूरदर्शन में मैं हमेशा काम करता रहा। अभी मैं कंचना जी से यही कह रहा था कि दूरदर्शन में हर साल मेरा ऐसा कोई साल नहीं गया जब मेरा कोई ना कोई शो एयर पे नहीं हुआ। अब क्या होता है कि देखिए, टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है कि वो इमीडिएटली जोड़ देता है आपको व्यूअर के साथ। हमेशा हर इंसान जो है वो थिएटर में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे फैमिलीज़ होती हैं जो टेलीविज़न से अपना गुजारा होता है उनका देखते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी जो रूरल ऑडियंस है उनसे कनेक्ट हो जाता है दूरदर्शन का अगर आप शो करते हैं तो बाकी तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और कल का जो कॉन्वर्सेशन था with Komal Nahata, with Goli Sahab, Ranjit ji, Raza, Gulshan, it went off very because हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम कभी भी किसी को छुपाते नहीं हैं। और मेरी पर्सनली आदत ये है कि अगर मैं दिल से बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो मुझे सुन रहा है उसके दिल तक ये बात पहुँचे। तो सिर्फ बात करना ही ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है कि आप किसी के दिल तक पहुँच सकें जो आपको सुन रहा है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तो सफ़र मुझे आज भी ऐसा लगता है 50 साल काम करने के बाद कि आज भी मेरा सफ़र शुरू हुआ है। और दिस इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड आई होप इट गोज़ ऑन। नाउ माय सन शौर्य इज़ हियर एंड शौर्य, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से लम्हे रहे हैं IFFI 2023 के जिन्होंने आपके दिल को छुआ? IFFI has been organized so well, and मैं डैड से वही जिक्र कर रहा था कि the way it's been done and the way I've been watching the entire setup इतना अच्छा रहा। and like कल जैसे विलन्स के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि खलनायक के बिना नायक अधूरा रह जाता है, एंड उनका एक वेटेज होता है वो फिल्म और वो प्रोजेक्ट के, जिससे वो प्रोजेक्ट को एक डेप्थ मिलती है और एक वेटेज आता है। तो एज आई हैव बीन सीइंग डैड, रंजीत अंकल एंड ऑल, रजा अंकल ग्रोइंग अप इन माय यंगर डेज, तो मैं देखता था कि द खलनायक का एक कितना कंट्रीब्यूशन है वो मूवी के लिए, कि वो इट मेक्स ही मेक्स द मूवी सो मेमोरेबल कि ऑडियंस इवन आफ्टर 15 to 20 years they remember these specific characters, and that was something which was so wonderful watching them talk and having such a candid talk with all of us. तो देखिए, अगर लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी मिली एक खलनायक तो करना डेफिनेटली आई वुड लव टू प्ले अ विलन, मे बी नॉट एज गुड एज हिम बट बेटर, आई होप बेटर। एक पिता हमेशा यही कहेगा कि मे बी बेटर। जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी हो, मैं सिर्फ अपने पुत्र के बारे में ही नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी नए नए लड़के आएँ जो विलन का जो नेगेटिव रोल्स करें वो हमसे बेहतर साबित हो। जिस तरह हमने आर्ट की और हमने कमर्शियल सिनेमा के माध्यम से जुड़े रहे, सेवा की, तो वो भी ऐसा ही कुछ करें। तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे आज मुलाकात हुई, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। Thank you so much for joining us. Over to you, Akshay. Thank you, Satyapriya, and I'm so lucky to have the Honorable Chief Minister of Goa with me, Dr. Sawant. I mean, pleasure to have you, sir. And first of all, I'll begin with big congratulations to you. Thank you. So we have very well organized the IFFI. And once again for this closing ceremony, I'm welcoming all the guests, all the Kalakars, those who have come specially for this function, and congratulations for the Michael Douglas for the Satyajit Ray Puraskars. It is one of the best IFFI this time we have given for the people of India and for the globe.
चीफ मिनिस्टर सर, ऑब्वियसली वेन्यू के बारे में हम जब भी बात करते हैं दिल खुश हो जाता है. एक परमानेंट वेन्यू है, 17वां साल बैक टू बैक इन कंसेक्यूटिव ईयर्स गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है. एक सिनोनिमस बन गई है बात इफ़ी की. तो किस तरह से देखते हैं इस एवोल्यूशन को, इफ़ी फेस्टिवल का भी और गोवा के लिए कल्चर एंड इकॉनमी? जी हाँ, हमेशा के लिए गोवा ने बहुत ही अच्छा ईफी के लिए सब वेन्यू क्रिएट किया है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है. हमेशा के लिए लोग कहने ईफी जो गोवा में होते हैं उसके लिए भी अट्रैक्ट होते हैं, और ओवरऑल ईफी का इंफ्रास्ट्रक्चर और गोवा में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया. इससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर में क्रिएट करेंगे. हमेशा के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें सपोर्ट रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि हर साल का ईफी इससे भी ज़्यादा अच्छा होते जाएगा. सर, ऑल इंक्लूसिव, एक ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट बल्कि हर इंसान जो भले ही बीच पे घूम रहा हो, 3 ओपन स्क्रीनिंग्स रखी गई है. ऑल इंक्लूसिव एक फेस्टिवल रहा है ये. कमाल का एक्सपीरियंस लोकल लोगों के लिए. बहुत खुश है यहाँ पे. ऑब्वियसली एज द हेड ऑफ द स्टेट यू विल बी डिलाइटेड विद दैट. आपकी बात सही है, इस बार इंक्लूसिव एक्सपीरियंस रहा है. हमेशा के लिए ओपन स्क्रीनिंग रहा है कि बीचेस पे जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला है, मुझे लगता है कि गोवा और बाकी यहाँ के जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन्होंने भी ईफी एंजॉय की है. जी हाँ, डेफिनेटली कि एक बहुत बड़ा शानदार ईफी का सोहला रहा है. So just one last question. Obviously थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल जूरी से बात हो रही थी. हेड ऑफ द जूरी शेखर कपूर और उनके साथी थे. एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा एज अ फेस्टिवल काफ़ी एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, उसको प्रमोट करता है सिनेमा की ग्रोथ को. कैसे देखते हैं इंडिया की सिनेमा ग्रोथ को? डेफिनेटली कि जिस तरह से सिनेमा की ग्रोथ इंडिया में हो रही है, मुझे लगता है इट विल लीड फॉर द ग्लोब इन फ्यूचर. दैट्स ऑल. Thank you so much, sir. That was the Honorable Chief Minister of Goa giving his view about the amazing festival that we are having. And another film that was showcased here was Endless Summer Syndrome. And I am lucky to have the producer, the actress and actor of this film, Endless Summer Syndrome, with me. They'll be joining us shortly. Hi, hello. Good to have you, ladies. Hi, I'm Lindsay Taylor Stewart. I'm one of the producers of Endless Summer Syndrome, and we are just so happy to be here at IFFI Goa. And what a beautiful reception we had today for our screenings. So what an amazing experience Goa and India has been for us. We are equally delighted to have you. Please introduce yourself to the viewers on Doordarshan. Hi, I'm Frederica Milano, French actress. And I'm Sophie Collon, French actress too, from Paris. Endless Summer Syndrome, very interesting name. What the film is about, please tell our viewers. Well, it's a trip for a family in an idyllic summer holiday, but our leading lady gets a disturbing phone call saying that her husband is sleeping with one of their 2 young adult adopted children. And so Sophie Colon does a fantastic job throughout the whole movie, as well as Frederica Milano, Jem Degger, and Matteo Capelli, directed by Iranian director Kava Danishman. And we are all Prague-based and Parisian-based, and we are just so excited to have our Asian premiere under our belts. Endless Summer Syndrome and endless amazing entertainment is lined up for you, ladies. Please go ahead and enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. On the red carpet, we have the director of Dil Hai Grey, Mr. Sushi Ganeshan. A very warm welcome on the red carpet of the closing ceremony of IFFI 2023. आपकी फिल्म की बात करें तो आपकी फिल्म का जो गाला प्रीमियर है कल हुआ था यहाँ पर, कैसा रहा ऑडियंस रिएक्शन? क्या एनर्जी थी जिसे आप लेकर यहाँ IFFI से वापस जाएंगे? I never expected that. No, the crowd really enjoyed and it's been connected very well actually. So honestly, one of the crowd after this Q&A, that one person said, "Sir, we are waiting for part 2." So that is, I think, that's a success. You know, that when somebody, when the film ends, they are expecting that one more sequel will come, and then they're comparing with the blockbuster films. Like, you know, it's like a very engaging. So I mean, any director just would love to hear that appreciation from them. I think this film connected well with the audience, because in fact, one of the critics who said, I'm very scared to carry my phone because I'm sharing, because anybody can penetrate into any time into my privacy. So this films give me a great awareness to me. So that is the biggest appreciation yesterday we received from this audience.
And it's all about making cinema that connects with the audience, that tells the story of the audience and today's times, isn't it? Exactly. So basically, this particular film talks about how this today we are sharing n number of information in social media handle. If it's lands with somebody illegally or some negative person's hand, how that person has been getting victimized. That's the story we are talking about. I hope, I think everybody, because every family, sister, mother, or just wife, everybody knows been somewhere they live their information with social media handles. So this film will be giving big awareness to the society. That's what I believe in. Thank you so much for joining us on the red carpet. Really thank this IFFI because it's a great platform. Before my film got selected in Toronto Film Festival, that is an international platform, but appreciation getting from our home ground, it's always a special. So thank you, IFFI. Thank you so much for joining us, and please enjoy the closing ceremony. Thank you. So Akshay, the countdown begins and we are just about to witness the gala closing ceremony of IFFI 2023. Absolutely, so much is lined up. Amazing music, amazing dance numbers, lot of awards they are lined up here, and we have one more interesting guest lined up here. I'm going to talk to her very shortly here, but rightly said, amazing festival. Closing ceremony is going in full guns blazing here. Very, very exciting, full flow here. And we are here with the amazing Isha Gupta here. Hi, Isha. Hi, how are you? We are very well. Isha, it's an, I have a little surprise for you. I want to sing something for you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Isha. Happy birthday to you. Happy returns of the day, darling. So good to have you. We remembered it from the last time when we had caught up with you. This birthday just makes it special because this time I have my mother. Hi. She and my sisters, Rekha Gupta and Neha Gupta. So it makes it special. I think it's after 6 years that I'm actually with my family. So how does it feel walking the red carpet of the IFFI closing ceremony on your birthday? Listen, it feels... I couldn't have had a better birthday. Last year also, strangely, I was here on my birthday for the closing. And it's always wonderful because being from the Indian cinema, you're doing exactly what you love on your birthday, representing the Indian cinema. And Indian cinema has... No cinema has boundaries, you know. We are boundaryless, we are global. And that's what IFFI is about, representing India and the international culture. ये हमने खास तौर से आपके बर्थडे के लिए क्लोजिंग सेरेमनी रखी है यहाँ पे. मैंने बोला था कि यार छोड़िए, but then मुझे पता चला कि बोला कि नहीं आपका बर्थडे. आप छोड़ने वाली चीज है नहीं, बिल्कुल भी नहीं. No, it's so good to have you here on the red carpet. Thank you so much. Thank you. Isha, you've been part of the steering committee, and you know, otherwise, like, what's been your experience like at IFFI? आपने बताया पिछले 5-6 साल से आप आ रही हैं as a full-fledged commercial actors. You travel all around the world. 54th edition, amazing growth. ग्रोथ से ज़्यादा आप ये देखिए कि हमारा इंडियन सिनेमा एंड हमारा कल्चर कहाँ से कहाँ पहुँचा है. एंड इवन हम लोग इस इंडस्ट्री से तब भी क्या होता है, आई थिंक IFFI इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन अस बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री वी एंड अप मिसिंग कितने प्रोजेक्ट्स, कितने एक्टर्स, द होल वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड इज आवर प्लेटफॉर्म, यू नो. IFFI के वजह से क्या फ़ायदा होता है दैट इंटरनेशनली जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट हैं, एंड इन इंडिया हम वी कैन क्रॉस ओवर. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ IFFI. आई गेट इंट्रोड्यूस टू सो मच अमेजिंग सिनेमा थैंक्स टू IFFI. रेखा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत का ये अमृतकाल है और आप समाज सेवा से और सामाजिक बहुत सारे विषयों से जुड़ी हुई हैं. क्या आपको लगता है कि IFFI वो मंच प्रदान कर रहा है सिनेमा को कि पूरा का पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की इस फिलॉसफी का पालन करते हुए यहाँ पर एक साथ आए? मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस फेस्टिवल का मैं 2016 से हिस्सा हूँ. आई एम द मेंबर ऑफ प्रीव्यू कमेटी. और मैंने इतने सालों में मैंने ये देखा है कि जो ग्रोथ हमारे इंडिया सिनेमा की हुई है, तो वो बहुत ही हमको फ़ख्र करने वाली बात है. और हम सब पूरे वर्ल्ड की हम फिल्में लेकर आते हैं और उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं. और बहुत बार ये होता है कि हमको लगता है कि हमारे कल्चर से बहुत करीब ये हो रहे हैं और हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस
पूरे विश्व में जा रहा है. Absolutely, rightly so. We have been talking about it, how Indian cinema is going global. Thank you, Isha. Thank you so much talking to us. Enjoy the evening. Thank you, ma'am. Isha. Thank you, Rekha ji. Well, always a pleasure talking to Isha. You know, she's been a frequent feature of International Film Festival of India, and here at the red carpet for the closing ceremony and the 54th edition, it can't get better than this. So, Satyapriya, amazing time you've had. Just a few minutes left for the closing ceremony to begin. और हम यहाँ देख रहे हैं कि सितारों, ऐसा लग रहा है जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं. सितारों की महफिल यहाँ लगी हुई है और सब के सब यहाँ उत्सव मना रहे हैं भारत का, सिनेमा का, और IFFI 2023 इस उत्सव का नाम है. कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिली और मैं ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था कि किस तरह से गोवा का कल्चर इंडियन फिल्म कल्चर का एक हिस्सा, परमानेंट फीचर बन गया है. सत्यप्रिया, पिछले 10 दिनों से हम यहाँ पर हैं, बल्कि 10-12 दिनों से हम यहाँ पे गोवा के कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं. किस तरह की चीज़ें आपने, लोकेशंस, खाना एंजॉय किया है? कुछ बताइए ज़रा अपने दूरदर्शन के व्यूअर्स को. व्हाट काइंड ऑफ गोवन क्यूजीन यू हैव ट्राइड हियर? आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैं ये कहूँगी कि नॉन वेजिटेरियन फूड, सी फूड तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी बढ़िया सी कोंकणी क्विजीन जो है वेजिटेरियन वो ट्राई की है. और अब हम चलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की ओर, जिसका हम सबको इंतजार था. द कल्मिनेशन ऑफ दिस 9-day long sojourn, which is IFFI 2023. It's time to go inside the auditorium and enjoy. Fourth International Film Festival of India, streaming exclusively on Colors and Geo Cinema की grand closing ceremony में आपका तहे दिल स्वागत है. This year, IFFI has broken records, set new benchmarks and reached many milestones. And to conclude our celebration of 9 days, let's welcome our host, who's an epitome of wit, elegance and charisma. Actor, model, television presenter, and India's most loved face, Mandira Bedi. Grandeur, elegance, और दुनिया भर के अमेजिंग फिल्म मेकर से भरे इस स्टेडियम में मैं मंदिरा बेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. And it is a privilege to be hosting this evening in front of path-breaking dignitaries and geniuses of the cinema world. इस साल के IFFI को देखकर हम सब सिर्फ यही कह सकते हैं, इतिहास रचते देखना है तो गोवा आओ, IFFI आओ और जॉय ऑफ सिनेमा का जश्न मनाते हुए खो जाओ. एक बार गोवा की हॉस्पिटैलिटी, गोवा के लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. They have been absolutely phenomenal. Ladies and gentlemen, आज की शानदार शाम की शुरुआत करने से पहले लेंगे हमारी मातृभूमि का नाम और करेंगे उसे प्रणाम. May I request all those who can to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे
जय हे Jai! Jai Hind! Ladies and gentlemen, IFFI over the past few years has become a benchmark event. It defines and shows the world कि एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को कैसे किया जाना चाहिए. पिछले 9 दिनों ने सिर्फ जॉय ऑफ सिनेमा को सेलिब्रेट नहीं किया है, बल्कि सिनेमा और फिल्म फेस्टिवल की किताब में ऐतिहासिक कारनामों को अंजाम दिया है और 270 इंटरनेशनल और इंडियन फिल्म्स को स्क्रीन किया, जिसमें 25 फीचर फिल्म्स और 20 नॉन फीचर फिल्म्स भी थी. एक बार इस जबरदस्त अकम्पलिशमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. अमेजिंग. 20th नवंबर से 28th नवंबर के इवेंटफुल 9 दिन किसी फिल्म से कम नहीं थे. बड़े बड़े सुपरस्टार्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया के हुज हू और सिनेमा डिस्कशंस, न्यूज़ मेकिंग मोमेंट्स. IFFI 2023 सच में एक सुपरहिट, सुपर इम्पैक्टफुल सिनेमा के जैसे था. इसलिए आइए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है जिनमें इन 9 दिनों की सिनेमा सेलिब्रेशन को हमने कैप्चर किया है. कैन वी प्लीज हैव द 54th IFFI फिल्म. Star-studded, stunning and so colorful. एक बार जोरदार तालियां हो जाए IFFI के लिए. Come on, big round of applause. अब हम करते हैं आज की शाम की बात. आज शाम हम सिनेमा जगत की डिग्निटरीज का करेंगे सम्मान. हमारे ऑनररी डिग्निटरीज का सुनेंगे प्रमाण. नेशनल अवार्ड विनिंग आयुष्मान खुराना की परफॉर्मेंस होगी. हार्मनी ऑफ पाइन्स का नेक्स्ट लेवल म्यूजिक और अमित त्रिवेदी के साथ द रिच वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की मस्ती में खो जाएंगे. सो गेट सेट फॉर अ फायरी नाइट जहां हम IFFI को कंक्लूड करेंगे और इस साल के मुकाबले के विनर्स को करेंगे अनाउंस. हाउ अबाउट वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर व्हाट्स लाइंड अप अहेड. तालियां तो हमेशा गूंजती है, पर कुछ महान हस्तियां होती हैं जो इन तालियों की जिम्मेदारी उठाते हैं. मैं अब मंच पर ऐसे एक हस्ती को बुलाना चाहूंगी जो पिछले साल दर साल IFFI को सफल बनाने के पीछे ढेर सारी मेहनत करते हैं.
गोवा की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी सांसों को गोवा की तरक्की और इफ़ी के विकास के लिए न्यौछावर करते हैं। इसलिए द 54th IFFI स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन जियो सिनेमा एंड कलर्स टीवी के सक्सेसफुल 9 दिनों की झलकी देने के लिए बुलाते हैं उन्हें जो हैं गोवा के रखवाले, गोवा की जान, गोवा के लोगों की धड़कन, द स्टेलर, द हार्ड वर्किंग एंड द एग्जेम्पलरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत। Good evening, friends. 54th IFFI closing ceremony. Present with me for this closing ceremony, all the ministers, all the MLA, Vice Chairman of the ESG, movie stars, icon and festival directors, Rishabh Shetty, Ayushmann Khurrana, and I think the Michael Douglas, he will reach soon. The esteemed guests from across the globe, the member of the Indian film fraternity and fellow cinephiles. It is the immense and heartfelt gratitude that I stand before you today to mark the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India. At the onset, I extend my greetings to all the winners under the different category. May you continue to inspire more and more talent. I can certainly say this 9-day cinematic extravaganza held in the state of Goa has been the journey of discovery of the celebration of artistry and a testament of the power of the storytelling. Firstly, let us have a huge round of applause to 7,000 delegates who made this festival the vibrant and diverse gathering, the more movies lovers and from all over the India and beyond. You have made this cinematic fest the memorable one. This year's edition has been the testament to our commitment to fostering an inclusive environment where the diverse voice converge and cinematic excellence thrives. This year's festival showcased the 270 films from 78 countries, and we saw some of the spectacular premieres. As we bid farewell to this vibrant festival, I am overwhelmed by this response it is received. Over the past week, the Goa has been transformed into the hub of cinematic excellence, where this silver screening has been showcased, the calibre of the stories, emotions, cultures, and across the globe. The 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries, spanning and languages and culture. The Cinema of the World segment, hosting over the 103 films, truly exemplifies the richness and diverse of the narrative from the various culture. It has been empowering for our delegates to immerse themselves in the cinematic extravaganza, witness emerging the trends and engaging with the bright minds at the film bazaar, fostering the platform for the collaborations and discussion. The inaugural Cinemela was the celebration of the India's diverse religion, film, food and culture, understood the sense of our nation's cinematic heritage. This year's the festival has been particularly special for Goa. We have persisted in our efforts showcasing the rich cultural heritage of Goa and providing the platform for the Goan filmmakers to showcase their talent and creativity.
The participation of the Goan filmmakers this year, the festival has been truly remarkable as these films have been also received the critical acclaim. This is a testament to the talent and potential of the Goan cinema, and I am confident that it will continue flourishing in the years to come. As we conclude the edition of the IFFI, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for consistent support for the state of Goa. I also heartfelt thank for the Union Minister of the Information and Broadcasting, Mr. Sri Anurag Thakur, and entire organizing team for the tireless efforts for making this festival grand success. I would like to thank the esteemed jury members for their dedication and expertise in screening the best film for this year's festival. The judgment has been instrumental in showcasing the finest cinematic works for around the world. I think we must give a round of applause to the National Film Development Corporation, Entertainment Society of Goa, and National Institute of Design, Ahmedabad, for their collaboration in efforts of making the IFFI 2023 a grand success. Let us also give the round of applause for the Michael Douglas, and who have legendary actor and producer who received the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award this year. Mr. Michael, who would love to see you bring your magic to Goa for your next project. We are eagerly extend, we welcome and lay the red carpet for you in future. With the lush green forest, river, waterfall, and quaint villages, with the terraced rice field, and Goa will be the filmmakers' paradise for offering the mix of historic and modern settings for the traditional Goan house for charming streets. When it comes to film locations, we have got the streamlined system for the shooting films, offering hassle-free permits to assess and diverse the locations. Being the Chief Minister of Goa, I also the Chairman of the Entertainment Society of Goa, I promise to extend all kind of support for the hassle-free film shooting and experience. With the incentive worth of the $3.6 million for the international filmmakers filming in India, co-productions as well as the post-production and VFX works and out of India, and the Goa is rolling out the red carpet for you. I stand committed to fulfill the vision of making the Goa is a heaven for the film industry. The plan and underway to this developed infrastructure providing the cutting-edge technology and incentivize the international filmmakers. And the family, I would like to thank all the cinephiles, the film enthusiasts, film lovers, and who have made this festival vibrant and engage the experience. Your presence and enthusiasm have been the driving force behind the success of IFFI Goa 2023. IFFI Goa 2023 has been testament to the unifying powers of cinema. It has brought together the filmmakers, actors, cinephiles from all the corners of globe, creating the space for the dialogues, exchange, and mutual appreciation. As we close this chapter, I invite you all to carry the spirit of IFFI with you. Let us continue the celebrate of the magic cinema to appreciate its power to inspire and cherish the ability to bring the people together from all the walks of life. मैं फिर एक बार जितने सारे कलाकार गोवा में आए हैं इस आज़ादी के अमृत काल में इस IFFI को आपके क्लोजिंग सेरेमनी में
बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और ख़ास करके हमारे द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री जी श्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में वो पहुंच नहीं सके, लेकिन उनकी तरफ से भी जितने सारे कलाकारों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से इस आज़ादी के अमृत काल में जो हमने आगे विकसित भारत का सपना जो देखा है, वही सपना सच करने के लिए इन द सिनेमैटिक वे ऑल्सो वी विल सपोर्ट यू इन फ्यूचर। द गोवा गवर्नमेंट सभी फिल्म स्टारों के साथ फिल्म मेकिंग में हमेशा के लिए लगा रहेगा, ये मैं इस इफी क्लोजिंग के वक्त वादा करता हूँ। और डेफिनेटली हम राह देखते हैं द नेक्स्ट ईयर की आप लोगों को स्वागत करने के लिए हमेशा के लिए गोवा तयार रहेगा। परत एकदा समेस्त गोंयकारांक हांव तुमी दाखयल्ल्या 9 दिसाच्या मोगाबद्दल प्रेमाबद्दल तुम्ही जो मोग सगळ्या कलाकारांक दाखयले आणि व्हडा उपस्थितीत सगळे जाण हांगासर उपस्थित रावले त्याबद्दल तुमचेय सगळ्यांचे स्वागत करता। 9 दीस इफी तुम्ही मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी एन्जॉय केला। परत एकदा सगळे हांगासर कलाकार उपस्थित आसा त्या सगळ्यांचे नेटान ताळयो वाजोवन तुम्ही सगळ्यांनी स्वागत करचें हे तुमच्या लागीं मागता आणि इफी क्लोजिंग सेरेमनीक तुमचोय सगळ्यांचे हांव खूब खूब स्वागत करता। देव बरें करूं। Honorable Minister, thank you very much for your very inspiring words and for your gracious hospitality and efforts. That's what's made IFFI such a huge success. Ladies and gentlemen, IFFI गोवा का हाइब्रिड अवतार हमारे टेक्निकल पार्टनर्स के बिना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसलिए हम हमारे उन टेक्निकल पार्टनर्स को ऑनर करने वाले हैं जिन्होंने पिछले 9 दिन IFFI की बैकबोन बनकर उसका सीमलेस एग्जीक्यूशन किया। और इन पार्टनर्स को फेलिसिटेट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी वाइस चेयरमैन एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा मिस डिलाइला लोबो, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गोवा डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, Festival Director IFFI, Joint Secretary Films and MD NFDC, Shri Prithul Kumar, and CEO Entertainment Society of Goa, Ms. Ankita Mishra. Big round of applause. And now I'd like to invite on stage our technical partners. May I request Plus Electronics, represented by Dharmendra Kumar Mishra. Real Image Cube, represented by Girish Khandare. Cineonic Barco, represented by KJ Madhusudan. And SMPTE, represented by Ujjwal Nirgudkar. Requesting our esteemed dignitaries to felicitate our technical partners with a token of appreciation. How about a photograph? Can we have a photograph with everyone, please? Thank you. And thank you for all your technical support. Thank you. Requesting everyone to please take their seats. OTT की वजह से ज़माना ऐसा हो गया है कि अगर किसी को आप कहें मिर्ज़ापुर देखना है तो लोग यूपी के बजाय OTT ले जाते हैं, और अगर कोहरा देखना हो तो ठंड नहीं बफरिंग का इंतज़ार करते हैं। OTT ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है और इसलिए इस साल से IFFI ने OTT प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स और कंटेंट को इनकरेज करने के लिए द फर्स्ट एवर OTT अवार्ड की घोषणा की है।
This year for the Best Web Series OTT Award, जो सीरीज के डायरेक्टर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर को दिया जाएगा, विनर्स को एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के साथ सम्मानित किया जाएगा। इस कंपटीशन में 15 OTT प्लेटफॉर्म से 32 वेब सीरीज ने पार्ट लिया है, जिसके बाद OTT जूरी चेयर्ड बाय राजकुमार हिरानी सर ने 4 नॉमिनीज चुने थे एंड द नॉमिनीज आर पंचायत सीजन 2 डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा, रॉकेट बॉयज सीजन 1 क्रिएटर निखिल अडवाणी, डायरेक्टर अभय पन्नू, निर्मल पाठक की घर वापसी डायरेक्टर राहुल पांडे सतीश नायर, ह्यूमन क्रिएटर एंड डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह and Moses Singh. Big round of applause for our 4 nominees, ladies and gentlemen. इन नॉमिनीज से कोई एक है विनर ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज OTT अवार्ड, और इस अवार्ड को अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत को. प्लीज सर, यू आर गोइंग टू बी मेकिंग मेनी ट्रिप्स ऑन स्टेज. The gorgeous acting genius, national award winning actress Divya Datta. Big round of applause. And two-time national award winner, critic and filmmaker Shri Utpal Borpujari. Requesting the Honourable Minister to please do the honours, announce the name of the winner for the first Best Web Series OTT. Here we go. पंचायत सीजन 2. मुझे सेफ साइड के लिए अप्लाई कर देता हूँ. इसकी ब्लैक जॉब है. ग्रेजुएशन टाइम से कोई एक जॉब होगी निकालने के लिए. ये थोड़े सिद्ध तरह के आदमी नहीं है. हमको कौन सा रिश्तेदारी करना है उनसे. हमारे लिए तो रोड का फंड निकल जाए बस. हाय रिंकी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? काम ही था. Requesting Mr. Deepak Kumar Mishra, Director of Panchayat, Mr. Vijay Koshi, Producer President of the Viral Fever TVF, Mr. Manish Menghani, Director Content Licensing Prime Video, to please come on stage to accept the award. Big round of applause for the first award for this evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, big round of applause. Panchayat Season 2, first winners this evening. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Thank you for doing the honors. Ladies and gentlemen, हमारी जूरी ने एक और वेब सीरीज सिलेक्ट की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमारे सामने लाया और सबके दिलों को छू लिया. And I'm talking about Rocket Boys Season 1, directed by Abhay Pannu on Sony Live. जूरी के हिसाब से ये वो वेब सीरीज है जो हर किसी को देखनी चाहिए. So एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Rocket Boys Season 1, a must watch if you haven't watched it already.
Ladies and gentlemen, 10 films from across the globe were competing for the prestigious ICFT UNESCO Gandhi Medal this year. This category encapsulates the timeless ideals of Mahatma Gandhi, endorsed by UNESCO, echoing Gandhiji's philosophy and advocacy for a world rooted in harmony, understanding, and peace. We would like to first felicitate the representatives of ICFT UNESCO, Mr. Serge Michel, Vice President ICFT, and Yuan Hoon, Director of the Platform for Creativity and Innovation. Can we have you join us on stage, please? Mr. Serge Michel. And to do the honors, may I invite Festival Director, IFFI, Joint Secretary Films and MD, NFDC, Shri Prithul Kumar. Thank you very much. Thank you. Requesting you to please take your seats. Thank you. And now, ladies and gentlemen, is the time to honor the winner of this cinematic masterpiece that stands out as a beacon of peace, tolerance, nonviolence, and compassion. The winner of ICFT UNESCO Gandhi Medal is for the film Drift, directed by Mr. Anthony Chen. The film Drift is an emotional portrait of an immigrant woman who seems condemned to wander by the traumatic and terrible reality of human madness. Her encounter with another woman beautifully draws the lines of hope and resilience. Let's take a look at the winner clip, please. Big round of applause for the winner, ladies and gentlemen. Big congratulations. और अब बारी है इफ़ी के उन अवार्ड्स की ओर बढ़ने की जिसके लिए सब बेसब्री से रुके हैं. The IFFI Awards serve as a hallmark of excellence and an emblem of exceptional storytelling prowess. इस साल IFFI के बेस्ट फिल्मों के विनर्स को चूज करने की जिम्मेदारी थी हमारी इंटरनेशनल जूरी की. A round of applause for our international jury who selected the best of the best. Renowned Spanish cinematographer Jose Luis Alcaine. Please keep the applause going, ladies and gentlemen. French film producer Jérôme Paya. Australian film producer Helen Leake. French film producer Catherine Dussett. And the chairperson of the international competition jury, prominent international filmmaker Padma Shri Shekhar Kapoor. Ladies and gentlemen, the time has come to announce the winners of the 54th International Film Festival of India, streaming exclusively on Colors TV and Jio Cinema. Directors वो होते हैं who breathe life into a script, transform words into captivating images. And our first award is for Best Debut Feature Film of a Director, यानी कि वो director जिसने पहले ही बॉल में छक्का मारा है.
And the award goes to Rega Azad Kaya for the film When the Seedlings Grow. A tale which succeeds in showing us a day in the life of a father, daughter, and a lost boy through a succession of small events. An intimate story of the characters as well as a country and its traumas. Let's take a look at the winner clip. مردگی چه حالته؟ کلوه حالته رو دیدی؟ شخار 48 تله حالت نزنه ناوی دایی که باوی تچنه؟ نمیشه بی دکتر شدم ممکن در کردم طبیعت دا مره نینه جیان هر بردوامه A round of applause, ladies and gentlemen. Unfortunately, he couldn't be present here today. Nonetheless, congratulations to Rega Azad Kaya for the award. IFFI अब उस एक्टर को सम्मानित करने जा रहा है जिसने सिर्फ किरदारों को ही नहीं बल्कि इमोशन का आर्किटेक्ट बनकर उस रोल को ऐतिहासिक बनाया है. The award for the best actor male goes to Poria Rahmi Sam for the film Endless Borders. A round of applause for Mr. Poria Rahmi Sam for showing us the richness of acting and interacting with his partners, children and adults in challenging shooting conditions. Can we have the winner clip, please? بچه‌ها همه ساکت می‌خوام یه چیزی بهتون. فقط کافیه یه نفر شما رو با هم ببینه. جنگ میشه. برای اشتباه کردین. چیکار داری می‌کنی؟ نزنش. بابا! ولش کن. برادر همزمان Unfortunately, the winner could not be present today, but congratulations for the award. Big round of applause for the winner, here or not. हमारा अगला अवार्ड ऐसी अदाकारा के लिए है जिसकी आर्टिस्ट्री ने हमारे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बढ़ाया है और जिसका परफॉर्मेंस क्रेडिट रोल्स खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिलों में बसा रह गया है. Our next award is for Best Actor Female. Ladies and gentlemen, put your hands together for the winner, Melanie Thierry, for the film Party of Fools. An actress whose range of expressions gives us, with subtlety, all the emotions from hope to despair encountered in her character's crazy journey. Can we have the winner clip, please? And to present this award, may I please invite Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, French film producer, jury member Jerome Paya, and the mesmerizing voice of India, Hari Haranji, to please come on stage. May I please request Ms. Juliette Gramont from Institute Francis to please accept the award on behalf of Melanie Thierry. Big thank you for accepting the award
Honorable Minister, please stay back on stage. We need you for a few more awards. Thank you, gentlemen, for doing the honors. Yes, thank you very much. May I now invite on stage renowned Spanish cinematographer Jose Luis Alcaine, French film producer, jury member Catherine Dassett, and the charismatic actor and the poster boy of iconic dialogues, Ravi Kishan, to give away the next award. I believe Mr. Ravi Kishan is not with us yet. अगला अवार्ड उस स्पेशल सिनेमा एक्सपर्ट को दिया जाएगा जिन्होंने जूरी के दिल को छुआ है और सिनेमा की दुनिया में एक खास कंट्रीब्यूशन दिया है. It's time now to announce the special jury award, and the award goes to Rishabh Shetty for the film Kantara. The award goes to the director for his ability to put across a very important story. The film, though rooted in its own culture of the forest demons, reaches out to audiences regardless of cultural and social status. Can we have the winner clip, please? ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ನಿಮಗೂ ಬಾಲ ಇರುವ ಜಗಳ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮಾಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಮಾರೆ. Thank you for doing the honors. Dr. Sawant, I still need you on stage for a little while longer. And now I'd like to invite on stage the pride of cinema worldwide, Turkish director who's known for his bold, innovative and independent filmmaking. Please welcome Nuri Çelan, Australian film producer, jury member Helen Leek, and Miss India 2007, one of India's most stylish actresses, Isha Gupta, to give away the next award. And now, ladies and gentlemen, it's time to honor the captain of the ship, जिनसे पूछे बिना एक पत्ता भी set पे नहीं हिलता. The award for the best director this year goes to Stefan Komandarev for the film Blaga's Lessons. Stefan Komandarev tells a powerful and shocking lesson through the character of a woman who has decided to achieve her goals and in doing so compromises her values. The film is wonderfully embodied by a great artist, Ms. Elise Skorcheva. Can we have the winner clip, please? Какъв е смисъл? Ало? Дойдох за парите. Какви пари? И той ми каза да хвърля парите през прозореца. Имаме свидетел. Unfortunately, the director of the film could not be present, but we have Elise Skorcheva, lead actress, Blaga's Lessons, and Rosalia Abgarian, actress, Blaga's Lessons, to accept the award on behalf of Stefan Komandarev. Ladies, thank you very much for accepting the award on behalf of your director, and thank you to our dignitaries for doing the honors. Thank you very much.
Thank you, Dr. Sawant. Thank you very much, Honorable Minister. अब हमारे सबसे शानदार and the much coveted Golden Peacock Award को announce करने की बारी है. Ladies and gentlemen, it's time to present the award for the best film, IFFI, and the award goes to Endless Borders, director Abbas Amini, producers Kaveh Farnam, Farzad Pak. Crossing borders is about how complicated physical borders might be, yet nothing can be more complicated than the emotional and moral borders that you impose upon yourself. Film festivals, after all, are about crossing borders, and in the case of this film, the director has crossed political borders at the cost of his own freedom. Can we have the winner clip, please? جنگ بیبی جنگ کنم میرا ویل نکنم بحث با یا پشت و هزار نمیشناسیم آسیم چی میشه؟ چه برای سرش میاد؟ Ladies and gentlemen, a big round of applause. This is a very special film. Unfortunately, the winner could not be here today, but congratulations. The award carries the prestigious Golden Peacock, a certificate and a cash prize of 40 lakh rupees. That's a big one. Ladies and gentlemen, this year we received a record-breaking number of entries for IFFI, and the competition was more exciting than ever. Hence, I would now like to invite the chairman of the international jury, the pride of India, the eminent filmmaker who was nominated for the Oscars, the man who gave us Mr. India, Bandit Queen, and many other exemplary films. Please give it up for Mr. Shekhar Kapoor. My God, there's so many people here. All right. Hello, everyone. You know, as head of the jury, what everybody asks me is, did you take the films really seriously? Did you all agree on everything? And I have one answer to that. If two creative people agree creatively on everything, then one of them is lying. One of them is not telling the truth. Of course we didn't agree. Of course no creative people agree with each other. But that's the job of a jury. The jury, what they do is sit down, argue, and say, no, you're wrong, and become enemies. And by the end of the day, we become friends again and start all over again the next day. So we take every film seriously because, as Michael knows, it's so difficult to make a film, right? You have a script. Nobody wants to listen to your script. Then you get someone to listen to your script, and then you say, where's the money going to come from? And then you find the money, and then there's a studio head saying, no, something else. And you work for years to try and get a film made. So every film that we saw deserves all of attention. And my jury members, thank you so much for bearing with me. Thank you so much for all the hard work. Thank you. You know, I'm getting frightened. There's so many people here. Hi, Goa. So film's important. Why is a film festival important? In the context of what's happening in the world right now, with the amazing conflicts that are going on, with the wars at all our borders going on, it's very important to tell our stories. We have to tell the story because our stories are who we are. And if we tell our stories to people and people listen to each other's stories across borders, across everywhere, then we'll understand each other because stories are fundamentally about being human. And films fundamentally, ultimately, all stories about who you are, what your culture is, who are you as a human being. And so being human is the most fundamental aspect of all our art. And there is nothing that you can do
without understanding who you are. I remember when I made Elizabeth and I said, hang on, I'm Indian, why am I making a film about this great British queen? And I went to Kate Blanchett and I said, Kate, there's only one way to make the film. Let's find out who the human being was beneath the character. Find the human being under every story. Share your stories. And that's why film festivals are important. That's why we all have to share our stories, especially with what's happening in the world now. So, Pramod Sawantji, thank you. Thank you for hosting this great festival. I remember when we first started this festival to say, it's Goa, nobody's going to come films. Just look around yourself. Thank you, Goa. You are the guys. Goa makes this festival go. Thank you, Michael. Thank you, Catherine. Thank you for coming here. It's all my love to all of you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts. Huge round of applause for a gentleman we are all so very, very proud of. और अब नेक्स्ट ऑनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के उस ब्रिलियंट एक्टर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी who is an epitome of path-breaking performances and next-level cinema. His versatility, his relatability, his popularity soars with each and every passing moment. Ladies and gentlemen, please welcome one of India's most loved stars, National Award-winning actor Ayushmann Khurrana. Welcome. However you want to do it. I don't center know, stage, center stage or podium, here? whatever works for you. Where's Andre and where's the bus? I'm waiting for my cue. I think I should be center stage. All right, go for it. Someone once asked me, what is the most expensive thing in this world? I replied, honor. Because one cannot buy honor with money. लाख कोशिश करके भी आप सच्चा सम्मान कभी नहीं पा सकते, कभी खरीद नहीं सकते, लेकिन जिनके पास काबिलियत है उनका सम्मान हर जगह होता है. Those who are worthy, who are qualified, who are capable will be honored everywhere. And that's why this genius of cinema is being celebrated and honored all across the world. यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And what should I say about this man? People read books in order to gain knowledge. Actors like me read him to know about acting. A phenomenon in the world of cinema, American-born but loved by the world, Michael Douglas. The prodigal actor and filmmaker. Great genes. Great genes. Both my mother and my father have been working actors their entire lives. The name that needs no introduction anywhere in the world. The guy on the right is Elliot Rowe. He's a physics professor and intervener. Now the other guy is a nuclear engineer. An artist who's earned the respect he commands. You want respect? Whose on-screen deliveries have been an acting masterclass for the next generation actors. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. And if you ask him his success secrets, he humbly and happily shares them. Well, this is a tough enough job. I plan on focusing on this. A brilliant actor and a man of character. If you want to talk about character and American values, fine. Just tell me where and when and I'll show up.
who has never budged from taking up unconventional and challenging roles. I stay. What do you think of that? The winner of 5 Golden Globe Awards, 2 Academy Awards, and the American Film Institute's Lifetime Achievement Award. He's still a work in progress. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Michael Douglas. The standing ovation is much deserved. Requesting you to please take center stage. Please take center stage. And requesting Dr. Sawant to please do the honors and present this very special Lifetime Achievement Award, the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award, to Michael Douglas. Requesting Mr. Douglas to say a few words. Mr. Sawant, Minister Salman, thank you so much for your presence and being here. I'd also like to share this honor with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Mr. Anurag Thakur, Minister L. Murugan, and my good friend who's brought me all the way here, Shalindra Singh, for inviting me to take part in this year's celebration. Thank you. It's an honor to stand before all of you tonight and receive the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. I'm humbled to join a precarious and prestigious group of past award recipients. Ray personified what it means to be a world-class filmmaker. His films represent not only the triumphs of the Indian film industry, but the boundaries potential of cross-cultural artistic expression. And with everything going on in our world today, this festival is a reminder of the magic of movie making. When you've worked in the movie business for as long as I have, it becomes clear that cinema is one of the few mediums that has the power to unite and transform us. It transcends divisions, whether that be geography, race, language, or even time. When a film touches us on a personal level and makes us laugh, cry, or rejoice, it reveals our shared humanity. And today, our global language of cinema is more meaningful than ever. So before I leave you, I want to take a moment to acknowledge some of the people who laid the foundations for my career. The achievement is as much theirs as it is mine. First, to my earliest mentors, the talented filmmakers, countless crew members and technicians. I wouldn't be here if it wasn't for their passion and dedication to our work together over these past 55 years. Second, to my father, Kirk, who set a high bar with his hard work, his strength, and his incredible stamina. I wouldn't be here if not for his passion and dedication. And to the public, he was an icon,
But to me, he was Dad. And he provided me with a blueprint that led me to be here today. And to my wife, Catherine, and my son, Dylan, are here with me tonight, along with my other children, Cameron and Karis. Thank you all for your love, your passion, your support, and your patience. And finally, thank you to all the audiences all over the world who push us to new filmmaking frontiers. And that's the reason we do this work. So thank you all for having me. It's been a pleasure. Thank you. Michael, it's very surreal standing next to you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yeah. So it's... No, I have to ask the questions. Oh, sorry. I was saying it's very surreal standing next to you, and I have some questions to ask, so I request you to please stay back. So 2 Oscars, 5 Golden Globes, a Primetime Emmy Award, numerous felicitations, acknowledgements across the world, and you have a glorious filmography. And out of those amazing characters and roles, can you just name one character which stayed with you? Well, Gordon Gekko is hard to get away from in Wall Street, so that would probably be the most iconic character. It affected a lot of people in Wall Street who said, "Oh, you're the reason that I got involved." And I said, "I was the bad guy. I was the villain." But you dress a villain well, be very beneficial. Wow. So Michael, India loves you a lot, and I'm sure everybody has followed your films, filmography, everything, and you love India too. So how many Indian movies have you watched? I've seen RRR. Om Shanti Om is played over and over in our house. Lunchbox is one of our favorites. And I was fortunate years ago when I was in college taking a cinema course to see some of Sarojit Ray's movies too. So it's been a nice experience. And I would imagine and hope the way that the cinema is going worldwide that we're going to be working more with an Indian director soon sometime. Wow, you took Ray's name, Satyajit Ray's name, and he's one of our pioneers of Indian cinema. And lastly, I would like you to say a few words in Hindi. In Hindi. And it goes like, India, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. Let's go slow. India, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. बहुत से प्यार से कम. Almost there. We'll try once again. It is very cute though. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. That's amazing. So Michael Douglas loves India. We love Michael Douglas. Congratulations, sir. And now, ladies and gentlemen, I have a pleasure of acknowledging the extremely talented, and dil se kehta hoon, speaking from my heart, one of the most beautiful, graceful, and fantastic actors, Catherine Zeta-Jones. We honor to have you here, ma'am. Absolutely right, Ayushman. She's a global star, recognized for her versatility. She's an Academy Award winner, BAFTA Award winner, and the winner of the prestigious Tony Award. She's a breakthrough performer and has been honored with the title of being the most beautiful woman on the planet several times. Please welcome the global icon, Catherine Zeta-Jones. And inviting on stage our Honorable Minister, please, may I request you to do the honors and felicitate Catherine. Thank you. Hello, everybody. I wasn't expecting this. I was very happy to just be wife. They're just wife, regular old wife. So I'm so glad I put on a pretty dress. Thank you so much, Minister. This is just a real honor, and what an honor it is to
to meet you, and I'm just our son Dylan and I are just generally blessed to be here. So Michael received this honor tonight, which he genuinely was very honored and proud to be associated with such an amazing filmmaker. I'd like to just say thank you to India for welcoming us so very much. We've never been to Goa before, and we thought, okay, we're going to eat different food. It's going to be a different culture that we all enjoy. But the one thing that is steadfast is the generosity and welcoming nature and hospitality of all Indians, whether it's in Goa, whether it's in Mumbai, in New Delhi, in Jaipur. So it was just an honor to come back. And then with this honor, it makes it even more special and memorable. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, how about a really huge, rousing ovation for our special guests? Standing up would not be out of line. We have two very, very, very special people from overseas here. We're honored and privileged to have them here with us today. Big round of applause. Thank you, thank you. Honorable Chief Minister, I request you to stay back on stage, please. Thank you. We need you a lot on stage today. Ladies and gentlemen, we have amongst us Asia's largest music promoter, जिन्होंने 72 feature films को produce और release किया है और इनकी फिल्में 16 national awards जीत चुकी हैं. He was also awarded the Best Director for his movie Kanchipuram. Ladies and gentlemen, please welcome the man who wears a million hats, the all-rounder, Mr. Shailendra Singh, for a very special felicitation. Congratulations and thank you, Dr. Sawant. Thank you very much for doing the honors. Ladies and gentlemen, the Honorable State Minister of Information Broadcasting, Shri Anurag Thakur, couldn't be here today, but he has sent us a special message. Can we please see that message? Honorable Chief Minister of Goa, and my dear friend, Dr. Pramod Sawant, Mr. Michael Douglas, Ms. Catherine Zeta-Jones, government officials, members of film fraternity, ladies and gentlemen. Namaskar, a very good evening to all of you. We are at the end of 9 days celebration of cinema. As we bring down the curtains on this 54th edition of International Film Festival of India. This IFFI edition was truly extraordinary, filled with notable firsts and groundbreaking achievements that showcase the best of filmmaking. We curated the screenings of about 250 films, that is close to 30,000 minutes of viewing across 68 international and 17 Indian languages from 78 countries worldwide. 23 master classes and in-conversation sessions were held, which were accessible not just physically but virtually too, and close to 50 gala red carpets organized during the festival really provided a glamour boost to the whole celebration. The diversity showcased at the festival is the living embodiment of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, that brought together creative thinkers, filmmakers, cinema lovers, and cultural enthusiasts from all over the world under one roof. The clarion call given by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is being followed in IFFI also.
This year's festival is where we celebrated inclusivity and accessibility. Films were specially curated for specially abled Divyangs, because they are the cinema lovers as well. So cinema lovers, so that they could enjoy the beauty of cinema at big screens with the help of sign language and audio descriptors. We made sure to include more than 40 movies directed by women celebrating their talent. A specially curated section of 7 films restored under the National Film Heritage Mission were screened at the 54th IFFI to the great appreciation of cinephiles. This initiative to preserve precious creative gems of Indian cinema, envisioned by Honorable PM, will witness the restoration of over 5,000 film and documentaries of multiple languages in the 4K digital format, ensuring that a future generation of Bharat can appreciate, enjoy, and be inspired by these great works. While preserving the old is our mission, so is promoting the new. The Film Challenge under 75 Creative Minds of Tomorrow showcased young talent in the creative field. The films presented by these young creative minds were thought-provoking and dealt with very important topic of protecting and preserving the environment. Mission Life, a message that is very close to our Honorable Prime Minister. I am happy to say that 45 of the 75 creative minds have already been offered opportunities to pitch their ideas to the leading companies in the sector. NFDC Film Bazaar expanded its horizons by introducing the VFX and the Tech Pavilion and a documentary section supporting innovation and non-fiction storytelling. Before I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to Mr. Michael Douglas, the world-acclaimed actor and producer, for being here to receive the esteemed Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for the year 2023. I also thank Ms. Catherine Zeta-Jones, an actress par excellence, to have accompanied Mr. Michael Douglas to make this moment special for him and for all of us at IFFI. I express my heartfelt gratitude to the esteemed jury members whose valuable time and dedicated efforts have been instrumental in shaping this edition of the festival. I would also like to convey my hearty congratulations to the winners of the Golden Peacock Awards, the first ever Best Web Series Award at IFFI. The team at NFDC, led by Festival Director, has been working meticulously all round the year to conceptualize and curate the festival. It has been the tireless and dedicated work of the entire team of professionals that you see realized over these days. I would also like to thank the state of Goa, led by Dynamic Chief Minister, along with all the government officials, also the people of Goa, for making this festival a grand success. Last but not the least, I would like to congratulate all the filmmakers, actors, and curators for making this festival a grand success. Let's carry forward the storytelling spirit, unity, and creativity beyond IFFI. Thank you all for being part of this incredible journey. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. Truly, we miss his presence here. Round of applause for our Honourable Minister of Information Broadcasting, Shri Anurag Thakur. और अब उनसे मिलने की बारी है जिन्होंने इस साल के IFFI की ऑन ग्राउंड कमान संभाली और ऑफलाइन सभी मसलों का हल किया. It's time for all of us to meet the genius behind this successful festival. He's the reason that the 54th IFFI was exceptional and grander than ever. Please welcome Festival Director, IFFI, Joint Secretary Films and MD, NFDC, Shri Prithul Kumar.
Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Michael Douglas, Ms. Catherine Zeta-Jones, Honorable members of the Parliament and Legislative Assembly seated here, distinguished invitees from diplomatic corps and international delegates, members of the film fraternity from across the world, friends from media, colleagues and officials, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the closing ceremony of 54th IFFI. As the curtains come down on this 54th edition of the International Film Festival of India, I stand here humbled and enriched by the enthusiasm and passion of the participants who graced this festival. This year, IFFI has already been briefed by the Minister that it has been grand in all terms. The number of films showcased and the number of film applications which came from 105 countries were 3 times it used to be earlier. The number of, there were 78 countries of whose films were showcased here. And it was a grand success because we also measured that the people who watched the films, the 261 films which were shown, on an average, people found it from very good to outstanding. 224 films were found outstanding. So that's a very, very great thing for the whole curation. But as we come to this end of a spectacular journey, I would like to extend my heartfelt thanks to everyone who has been a part of this and had made this remarkable. First and foremost, heartfelt gratitude for the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur Sahab, for his constant guidance, support, and also his vision that IFFI should truly be a celebration of cinematic excellence and cultural diversity. I would like to thank Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, whose indulgence and guidance have helped forge several improvements for the festival. Special thanks to Apurva Chandra, Secretary Information and Broadcasting, and Ms. Neerja Shekhar, Additional Secretary. Without whose constant support and encouragement, the organization of this scale was not possible. Our heartfelt thanks to the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, led by Honorable Chief Minister Dr. Shri Pramod Sawant, whose constant support and cooperation have been cornerstone of this event, and also the Vice Chairman of ESG and also the CEO ESG. We also express our gratitude to the National Institute of Design, Ahmedabad, in curating the film festival's branding that has indeed elevated the aesthetic appeal for the festival. I would like to thank the members of the steering committee who constantly guided the festival team. A special thank to our esteemed jury members whose discerning eyes and thoughtful deliberations have played a crucial role in recognizing and honoring the outstanding talent. I would like to thank Mr. Michael Douglas, who graciously accepted the invitation in Cannes extended by our Honorable Minister of State, Dr. L. Murugan, and is here with us today with gracious Ms. Catherine Zeta-Jones and his son Dylan. I would also like to again congratulate Mr. Michael Douglas for his Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for 2023. I would like to convey my hearty congratulations to the winner of Golden Peacock Awards. A special note of appreciation for our esteemed partners, sponsors, and collaborators. Their support and collaboration has been instrumental in realizing the grand celebration of cinema. Not to miss Wizcraft, Viacom, Amazon, Google, Netflix, and many more, so many more that the list will be full. And they have been really helping in elevating the festival. The festival team of NFDC and the Ministry of Information and Broadcasting, they have been working across several months to plan this festival and tirelessly to realize the grand celebration of this cinema. So, and to the dedicated members of the festival team and tireless volunteers, I offer my sincere thanks. Your hard work, attention to detail, and passion for cinema have made this festival an unforgettable experience. Your commitment to excellence has not gone unnoticed, and I am grateful for the countless hours you have devoted in making this event a success. A heartfelt thanks to all the media representatives, critics, and journalists who have covered the festival. Your enthusiasm and commitment to highlighting the magic of cinema have played a crucial role in spreading the word and creating a buzz for IFFI. I'd also like to highlight that this year,
this year, the reach of the festival, not just physically but virtually, has crossed more than 15 million, and we hope that this will cross 30 million by the end of the festival. And I'd also like to thank, last but certainly not the least, I would express my sincere gratitude to the audience, the beating heart of the film festival. Your presence, your enthusiasm, and your appreciation for cinema has made this 54th IFFI a vibrant and a memorable affair for all of us. Your engagement with films and the filmmakers is a testament to the power of storytelling which unites all of us. As we bid farewell for the 54th International Film Festival of India, let us carry with us memories of incredible films, the passionate discussions, and the shared love for cinema. May the spirit of storytelling continue to inspire, and connect us all. Thank you. Until we meet again. Thank you. समंदर, रेत, प्रकृति,